Hello. Welcome back to Almighty Blues FC, a fan channel for all to see and always will be. Absolutely. भाई सब लोग बहुत सारे ट्रांसफर्स हो रहे हैं यार, बहुत ज्यादा ट्रांसफर्स हो रहे हैं. तो भाई, what is the best way to bring the transfer doors? And that is the best way by looking at each team and भाई कैसे line up करेंगे, because we all know as much as we like the transfer stories, the drama, भाई the main thing is that कैसे भाई these managers are going to line up these teams next season, और that is the interesting part. तो हम लोग सब बन जाएंगे managers इस team में. It is definitely, we all know we like innovation and that's what Almighty Blues is all about, and hopefully you guys like it, because मुझे चाहिए बहुत सारा interaction as well, because आप लोग देंगे अपना votes, be it by comments, be it by poll, whatever it is भाई. लेकिन I need everyone to come in. तो सब लोग जल्दी जल्दी let's hit that like button, and that means that you can also hit that like button of the community post. Yes, community post में अभी अभी डाला है. So if everyone likes that, we'll have a lot of people in. I want each and everyone to come in, and that means basically Chelsea, of course, Arsenal, Manchester United, Manchester City, Barcelona, Real Madrid एंड PSG एज वेल. अगर सबके फैंस आ जाए तो बढ़िया. तो आज हम बात करेंगे प्रीमियर लीग के बारे में, ट्रांसफर्स, of course tactics as I said, then of course La Liga and a little bit of PSG as well. I will keep definitely Serie A, Bundesliga as well अगर time permits, लेकिन we will get to the other streams on that. भाई wow. That's interesting comment. Barca Universal Sport Freak in the house. क्या हाल है भाई? Big up क्या हाल है भाई? People to check out Sport Freak as well भाई, इनका भी बढ़िया चैनल है. Do check it out definitely. An upcoming creators as well. They have a team, so look at them. Hello bro, coming after completing exam. Okay bhai, nice Summer. I hope your exam went well, by the way. Nice to see that. And again, it's always good to kind of talk football after exams. I know that, I've been there, done that bro. Today feel Saudi. Yes. Literally मैं देख रहा था चेल्सी का. By the way, अपना जो लोगो है वो चेंज हो गया बीच में. Instead of the Stamford the lion, it is basically a Saudi emblem. क्या ही तो बोलूं. But yes, let's get to that 50, 100, 150 likes quickly. Darren, big up bro. Always here. I know that. All good. I hope you're well as good. And आज सबको मैनेजर बनने का मौका मिलेगा बिल्कुल. And that's what I need, because Bipra Arsenal fan house मुझे मालूम है, and I need some inputs, क्योंकि बहुत सारे strange transfer news भी हो रहे हैं, बहुत सारे obvious भी हो रहे हैं, and something that we always do. मैं ना जब भी फ्री, यहाँ पर I think समर बोल रहे थे coming after exam, मैं सच में बोलता हूँ भाई, मैं इतना कीड़ा है ना मेरे में, आप सब में भी है pretty sure. तो हम लोग जब फ्री टाइम होता है ना, ऐसी मतलब कोई वेले होते हैं ना, ऐसी कुछ नहीं करते भाई, मन में वही बनाते रहते हैं. 11 क्या बनेगा चेल्सी का, ये ट्रांसफर हो जाएगा, तो भाई वही करते रहते. तो एट द एंड ऑफ द डे वही करना है अपने को. दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट फुटबॉल, राइट? Kukurea and yeah, I think let's see what happens with Kukurea. Hoping for few questions as well. Animesh, nice to see you, right? New member in the house as always, supporting the channel. Are we also Habibi Club? गुड इवनिंग सनी, मंत्रा, योगेश. या आते हो हौसलू पे आते, हम लाइनअप बनाएंगे, रियल मैड्रिड की भी बनाएंगे एब्सोल्युटली. एंड यस, सऊदी एंड वेंकटेश, सरोजनी, फाउंड वर्ल्ड, मंत्रा, गौरव, टॉक शो, भाई सब लोग आ गए. चलो मैं स्टार कर रहा हूँ. अमृत इन द हाउस एज वेल. तो भाई कहां से शुरू करें? इससे पता चलेगा कहां है हमारी जनता ज्यादा, कितने पानी में है मेरे चेल्सी फैंस, कितने बारसा, रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, भाई सब लोग. कम ऑन, लेट मी नो इन द चैट कौन से क्लब से शुरू करना है आप लोग को. ट्रांसफर न्यूज एंड टैक्टिक्स इन टर्म्स ऑफ द लाइनअप्स. अब वो ये बोलिए, हम लोग ये करेंगे कि भाई व्हाट विल बी द लाइनअप कम नेक्स्ट सीजन बेस्ड ऑन द ट्रांसफर्स एंड व्हिच ट्रांसफर्स वी थिंक माइट एक्चुअली हैपन. तो आप लोग बोलिए, सब लोग कमेंट में बताइए अपना क्लब का नाम और द क्लब दैट यू वांट me to start with. I will create the lineup with you guys. ठीक है? तो everyone in the house, let me know. Gaurav, yes, we'll come to that as well. इंटरेस्टिंग कमेंट नवजोत, इंटरेस्टिंग. अनमोल, यस, योगेश बोल रहे रियल मैड्रिड से शुरू करेंगे. ओके. मंत्रा बोल रहे बारसा, मैड्रिड, PSG से शुरू करो, जल्दी खत्म हो जाए. अमृत भाई ऑलवेज अप फॉर इट. MUFC बोल रहे बसंत, बारसा, चेल्सी. भाई देखिए, इट्स ऑलवेज अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी. दैट इज अ प्रूफ. यहाँ देखिए कितने चेल्सी या मिलान है. मिलान तो एक भी नहीं है. यार रिमेंबर, यहाँ चेल्सी एंड मिलान फैन, but people are like more Liverpool, Manchester United. या ब्रूनो गुइमारेश नहीं होने वाला, ये क्लियरली मैं बता रहा हूँ.
नहीं होने वाला, मुझे नहीं लगता होगा अनमोल, नो डिसरिस्पेक्ट, बट आई थिंक इट इज नॉट हैपनिंग, इट इज नॉट हैपनिंग, क्लियर इज दैट, क्लियर इज जे। न्यूकासल यहाँ एक्सटेंड कर रही है, तो कोई यहाँ पर अगेन आप मुझे सोर्स बताइए, जहां तक मुझे मालूम है अप अंटिल लास्ट आवर मैंने जो देखा है, दिस इज अ क्लिक बेट गाइस, so do not get fooled by this. Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Man United, MUFC, Barca bring with your club. Okay, चलो भाई, मैन सिटी द चैंपियंस ऑफ यूरोप मानव बोल रहे हैं ऑब्वियसली। चलो भाई, यहाँ पर एक डिसीजन टाइम हो गया मेरा, तो आई कैन सी अ लॉट ऑफ चेल्सी एज वेल, लेकिन आएंगे, वी विल डेफिनेटली कम टू चेल्सी एब्सोल्युटली, लेकिन लेट मी हैव अ लॉट मोर पीपल जॉइन इन, ठीक है, तो तब करेंगे। देखिए इतने सारे प्लेयर्स हमारे, एब्सोल्युटली न्यूकासल आरएन एंड डब, एग्जैक्टली, नहीं ब्रूनो गुमारेश नहीं जाने वाला, पीपल डू नॉट गेट फूल्ड बाय क्लिकबेट, एक सजेशन है बस, दैट्स ऑल आई वुड नो, एंड इफ यू नो, सिंपल एज दैट। So I see a lot of Barca and Chelsea, to be honest, compared to basically Manchester United, Man City and Real Madrid. We'll come to every club, do not worry. यहाँ आपको कोई अपने competition नहीं करना है, अपने को करना है basically tactical lineup based on the transfer news, साथ साथ में हम बताएंगे कि what will be. तो Barca से शुरू कर रहे हैं हम, and we'll come to obviously my clubs as well as other EPL and La Liga clubs, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर Barca से शुरू करेंगे, everyone pretty sure Barca is going to play a 4-3-3 formation, or do you think, considering now that Busquets is gone, they will go with a 4-2-3-1? What will be the formation of Barca, everyone? I think it might be actually a 4-2-3-1, right? 4-2-3-1, lekin 4-2-3-1 like a narrow with a diamond up front is what I'm assuming. Would you agree with that? Yeah, Lucho is coming. Rifat, congratulations. And that's something which will change PSG, in my opinion. The difference is huge that you need a manager like that. Absolutely. And Saudi second. 4-4-2, 4-2-3-1. I think 4-4-2, which is almost like, in fact, it can be a 4-2-4 or 4-4-2 number. It is a diamond formation. We all know that that's something that we are looking at. तो भाई मैं यहाँ पर करने वाला हूँ based on the transfer news as well. तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हो, ऑब्वियसली ऑब्वियस वाले डाल देते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले डाल देते हैं स्टर स्टेगन को, नथिंग चेंजेस देयर, ठीक है। एंड देन you have left back, obviously with Alba going, and anyway Balde has made his name, so let's put in Balde quickly. Right back, भाई right back पाएंगे, give me a second, यहाँ पर अराओ को डाल दे सबसे पहले सेंटर बैक, right back. I think that you might actually have a new right back. Is that news in that? Let me see. Let me see. I think as much as Bruno Guimaraes आप लाना चाह रहे हो ना, नहीं वो that's a clickbait, in my opinion, and you will rather have to prioritize there, because in my opinion जो हुआ है in the last 24 hours between Gundogan and the media, I think it's a given. It's a given that Gundogan is going to Barcelona. Yes, people. Bye. Barcelona has nice weather, etc. एब्सोल्युटली मुझे लगता है गुंडोगन इज लीविंग मैनचेस्टर सिटी, और मैनचेस्टर सिटी जो लूज करने वाली थी 3-4-5 प्लेयर्स, आई थिंक अभी सिलेक्टिव सेलिंग करेंगे और सिलेक्टिव गिव अवे देगी, और वहां पर गुंडोगन माइट एक्चुअली बी वन. सो आई थिंक एज मच एज यू वुड से दैट इट्स काइंड ऑफ सरप्राइजिंग हाउ वुड यू गो विद अ गुंडोगन एंड दिस, बट लेट्स सी इफ वी कैन फिट इन दैट. मैं गुंडोगन डालूंगा लास्ट में, लुक्स लाइक इट, लेकिन व्हाट विल बी द ओवरऑल कॉम्बिनेशन, दैट्स द की, एंड आई थिंक इट लुक वेरी वेरी ऑफेंसिव, बट I think for me वही है, the full backs have to do their job. यहाँ पर obviously Pedri comes in, ठीक है, और you know what, actually Pedri would not play here. यहाँ पर हो सकता है Gundogan might come. I think this might be Gundogan. अभी के लिए as things stand, Gavi is here, but we will change that. We will change that. आप लोग भी अपना 11 बताइए based on that. कैम पोजीशन में बेसिकली यहाँ पर पेड्री leftish cam, and rightish you will have a Rafinha or a Dembele. I know he likes Dembele, so probably Dembele is what I'm assuming if he's fit. That's Xavi or upfront Lewandowski. अब देखते हैं आप लोग के कमेंट्स में, देखते हैं what do you all think. मतलब this is something which is possible, लेकिन realistic क्या है based on the transfers. ओके, यहाँ पर पेप इंटरव्यू एज वेल, एब्सोल्युटली पेप ने भी बोला है दैट बेसिकली अगर अभी तो हम चाहते हैं गुंडोगन रहे, लेकिन अगर गुंडोगन जाना चाहे तो भाई देखेंगे, मतलब ही इज गिवन अ चांस. वैंडरसन राइट बैक, आई डोंट वांट एनी अदर. आई डोंट थिंक he'll start वेंकटेश, आई डोंट थिंक he'll start, एंड दैट्स द थिंग. हम स्टार्टिंग 11 बता रहे हैं यहाँ पर, राइट बैक लगा दो कुंडे को, कोई बात नहीं. आई थिंक टू बी ऑनेस्ट कुंडे might not be the right back to begin. I genuinely believe that, Anmol. Newcastle want Rafinha's swap deal with Bruno Guimaraes, 30 million. I don't think so that's going to happen, Sajidur. That's not going to happen. Rafinha is not leaving. That's a clickbait in my opinion. There is also news or multiple media news that Guimaraes का extension चल रहा है, and I think I rather follow a
Fabrizio Romano than anyone. और Fabrizio Romano has said in the last few minutes, मेरे भाई, that गुमारेश का extension की बातें चल रही है. That is what both parties intend. भाई, Gumaresh is what, along with Trippier, that Newcastle were rebuilt around. They are not letting go, Gumaresh in a Champions League season after 20 years. तो वो clickbait है मेरा भाई, clear as day. ठीक है, आप लोग ऑफेंड करना तो हो जाओ, मैं रियलिस्टिक ट्रांसफर न्यूज बताते हूँ एट दैट पॉइंट टाइम. थिंग्स कैन चेंज, ऑफ कोर्स, ट्रांसफर न्यूज ऐसी होते हैं. अरे ऋतुराज ब्रो, यस, लूचो टू पीएसजी, यस, दैट इज डन एंड दैट इज व्हाई मैंने डाला है थंबनेल में. पुदिन, क्या हाल है भाई? नाइस टू सी यू. कैंसेलो एंड राइट बैक, यस. सो आई थिंक दैट माइट बी अ पॉसिबिलिटी. दैट इज अ पॉसिबिलिटी फॉर श्योर. कुंडे ही बोल रहे हैं आप तो. फॉर मी इट इज अ 3-2-4-1 विद क्रिस्टियनसन, अराहो, कुंडे, अमरबात, गार्सिया, फ्रेंकी डियोंग, ओके, बाल्डे, गावी. ओके, आई डोंट थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल एरिक गार्सिया इज गोइंग टू स्टार्ट. ठीक है, ये तो गिवन है. नहीं तो अगर जावी को ट्राई करना था, आई थिंक लास्ट सीजन ही वुड हैव ट्राइड अ लिटिल बिट. आई डोंट थिंक ही ट्राइड इनफ. सो एरिक गार्सिया इज नॉट गोइंग टू बी अ स्टार्टर, दैट्स फॉर श्योर. अमरबात माइट बी अ पॉसिबिलिटी. ठीक है, लेकिन अभी गुंडोगन आने वाले. आई नो दीज आर टू डिफरेंट प्लेयर्स वी आर टॉकिंग अबाउट, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन you would say that Gavi, who starts for Spain, does not start, is also a question mark for me. Okay, Gavi और Gundogan, Frenkie de Jong, Rafinha, Lava. So देखिए, इन गेम प्लो they will anyway become that. I agree with you on that. लेकिन I don't think on paper it will be three the back. Let's see. Right back, Jeremy, Frimpong. I think this might actually work. In my personal opinion. Gerard Romero is just waffling in this case, yes, although he doesn't, but he is. In fact, I'm telling you guys, it's a clickbait. Well, I think it might be a loan again. Putin, it might be a loan. तो यहाँ पर करेक्शन क्या है मानव ने? करेक्शन, बाल्डे, गावी / गुंडो, पेड्री, रफीनिया. हाँ, बाय द वे, जावी प्रेफर्स डेम्बेले एंड वी ऑल नो दैट, गिवन अगर दोनों फिट होते तो. दैट्स व्हाई मैंने डाला है. बट अगेन आप लोग को देख रहा हूँ, वेट 2 नंबर 10 rather than 4-2-3-1. चलो, आप इतने लोग बोल रहे हो तो वो कर देते हैं, लेकिन आई जनरली डू नॉट थिंक सो. सो अगर आप बोल रहे हो 3-4-2-1, ये बोल रहे हो क्या आप? 3-4-2-1 is what you're saying, I'm assuming, right? ठीक है, मतलब it also kind of makes sense as well, कहीं ना कहीं. तो आप लोग बोल रहे हो अभी के लिए कुंडे, as much as Jeremy Frimpong might come, and they are also, मतलब Pavard और Cancelo could be options as well. लेकिन अभी as things stand, it might be Araujo. एक second, Araujo plays in the center back. Actually, Christensen center back is actually quite good, to be honest, and considering the pace और यहाँ जो होगा ना, we can definitely say that there might be a difference. एक सेकंड, यहाँ पर हम डाल देंगे बाल्डे को. ठीक है, और हम यहाँ पर डाल देंगे किसको? तो यू आर सेइंग दैट देयर विल बी अ, ओके, सो Amrabat is quite kind of likely because he is affordable right now. और यहाँ पर गावी के जगह हम डाल देंगे फ्रेंकी को. Yeah, this can be another one. But इसमें problem है कि will we have Gundogan playing? Where will Gundogan play? Will he play just behind the striker? I don't think so. तो ये problem हो जाता है इसमें. Right wing किसको डालो आप? That's the interesting. एक सेकंड, मानव का देखते हैं. I don't think Barca should be an attacking right back. They should need a midfielder. तो ठीक है, तो यहाँ पर you will have someone like a Rafinha who does more defensive work, is what you're saying. Okay, and यहाँ पर just behind the, यहाँ पर you will have a Pedri. And यहाँ पर you'll have a Gundogan. This is what you're saying? I don't think so, bro. मैंने ख्याल से जो पहले डाला था वो बेटर है. ठीक है, anyway. Let's see. Christensen very good at central area. Yes, absolutely. I think this is the best position for Christensen if you really ask me. Foyth would be number one priority, is if not Cancelo, Javi said. Yeah, but Foyth का price यार, price is an issue. अनमोल अभी भी याद रखिए. They had a chance to sell Ansu Fati, but Ansu Fati basically has not been, in the transfer talks as much. खाली वुल्फ से इंटरेस्टेड एंड देन बेसिकली क्लियर स्टेटमेंट आया था बारसा से. तो कहां से पैसे बनाएंगे? दे, आई नो दैट कहीं ना कहीं अप्रूवल लिया इन टर्म्स ऑफ सैलरी कैप, बट टू साइन प्लेयर्स यू स्टिल नीड टू गेट रिड ऑफ सम सैलरी एज वेल एज प्लेयर्स. Sergio Rico out of coma. Okay, nice man, nice to know, bhai. That's great to know. Kunde doesn't want to play as right back. Yes, इसलिए शायद 3 the back. I have done it right now, but I generally believe, Sagnik, thanks bro, big up to Sagnik. Dembele से अच्छा नहीं, विटर ओके स्टार्ट तो नहीं करेगा, 100% नहीं करेगा. विटर ओके तो बारसा इज डन, आई बिलीव सो. इट विल बी डेफिनेटली देयर, लेकिन ही विल बी मोर ऑफ अ स्क्वाड प्लेयर.
अगेन यू कैन आर्ग्यू, गुंडोगन ने बोला क्लियरली दैट डॉर्टमंड नहीं जाने वाला है, ठीक है, और ही प्रोबेबली वांट्स बार्सिलोना क्लियर। तो दिस माइट बी मोर डुएबल इन टर्म्स ऑफ द स्टार्टिंग लाइनअप, क्योंकि अमराबाद एक डिफेंसिव मैन है अलॉन्ग विद डियोंग। लेकिन मुझे लगता है फ्रेंकी प्लेस गुंडो, हाँ फ्रेंकी को ड्रॉप नहीं करेगा भाई, नहीं करेगा, फ्रेंकी स्टार्ट्स ब्रो। अगेन it could be that, again remember Ferran Torres, मुझे लगता है the fact is not starting for Spain has been telling me कि Ferran Torres eventually, अभी बहुत दिन बाकी ट्रांसफर्स में, he will move। जो न्यूकासल की स्टोरीज आ रही है ना रफीनिया, I think it might be Ferran Torres to Newcastle, that is also a link by the way, and it will not be Rafinha going in my opinion। Okay, 3-2-4-1, हाँ ओके 3-2-4-1 काइंड ऑफ वही है। इनिगो राहो क्रिश्चियनसन, नहीं इनिगो मार्टिनेज डजंट स्टार्ट यार, डजंट स्टार्ट इन माय ओपिनियन। आई थिंक कुंडे स्टार्ट्स जनरली स्पीकिंग, आब्दे बाल्डे और बाल्डे पेड्री गुंडो रफीनिया लेवा। तो भाई ये बहुत लाइट, अच्छा ठीक है, अमराबात फ्रेंकी डियोंग लिखा है आपने, ठीक है। तो दिस लाइनअप लुक्स मोर लाइकली टू बी ऑनेस्ट रफीनिया की, हाँ तो अगर वो जैसे मानव ने सजेस्ट किया था, और बाय द वे काफी लोगों ने सजेस्ट किया, देखिए आई एम गोइंग बाय माय थॉट्स एज वेल एज गोइंग बाय द चैट, you guys are definitely my panel, so everyone is saying that it makes sense by the way to play Rafinha if you're going a 3-4-2-1, ठीक है, that kind of makes sense। but again मुझे लगता है Gundogan in this formation is not ideal, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 3-4-2-1 and not 3-4-3। लेकिन again Balde has a lot of work वहां पर, क्योंकि remember Araujo is not a left-sided center back, ideally is awesome, लेकिन वो है नहीं। Christensen could have played that, लेकिन trust me in a 3 the back Christensen is भाई एकदम, that is a crime if you play Christensen left center back in a 3 back, I'm telling you directly, ठीक है। and pretty much sure आप लोग जानते हो मैं Christensen गेम देखा हूँ भाई, right from the academy days and till the end I know what Christensen all about, ठीक है। लेकिन अमराबाद डियोंग makes more sense because अगर वहां पर गुंडोगन डियोंग डालेंगे तो बहुत ही ऑफेंसिव हो जाएगा। आई कैन अंडरस्टैंड गुंडोगन और डियोंग खेलते अगर वो होता लाइक अ 4-3-3 सिस्टम, अगर एक एक्स्ट्रा मैन होता मिडफील्ड में, लेकिन आई डोंट थिंक दे विल प्ले if it's like a 3-4-2-1 system। 4-2-3-1 is the best for next season। मैं वो उससे शुरू किया था वेंकटेश, बट आई एम गोइंग विद द चैट, मैंने दोनों ही किया था, आप लोग देख सकते हो इन द फर्स्ट फ्यू मिनट्स ऑफ द स्ट्रीम, मेरा वो भी लाइनअप था उसमें अगर होगा, लेकिन अगर 4 एट द बैक होगा देन आई थिंक वी नीड अ न्यू राइट बैक। आई डोंट थिंक कुंडे विल बी प्लेइंग राइट बैक एज अ स्टार्टर, पवार डजंट वांट टू प्ले राइट बैक, ये भी एक रीजन है एब्सोल्युटली। लेकिन आई थिंक जेरेमी फ्रिम्पोंग माइट बी अ पॉसिबिलिटी। हेलो प्रेडेटर गेमिंग, क्या हाल है भाई? Okay, Ferran Torres apart, I think he's going to Newcastle। I feel it's more like a 4-4-2, I think। Okay, could be possible, but again ज़्यादा लोग ने बोला तो I'm going with that। Gundo is in the proper number 10, the box में transitions into diamond with Gundo and Stones being number 8 and KDB proper 10। when it's a box Gundo plays number 10 for pinning the backline। बिल्कुल, तो इसमें भी आप देखो ना, very very well explained by Manav, big up to Manav and everyone in the chat भाई। यहाँ पर भी वो देखियो, it could be the case of almost like a 3-3-3-1। गौर से सुनिएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, 3-3-3-1 हो सकता है व्हेन इन प्ले बेसिकली दे माइट, अब प्रॉब्लम में विड्थ नहीं आएगी, इसलिए मैंने किया है 3-4-2-1 बिकॉज द 3-3-3-1 वुड बी पॉसिबल। हाउ? अराहो, क्रिश्चियनसन और कुंडे एट द बैक, then you have Amrabat, De Jong just in front of them, you have a Gundogan, that's like a 3 in midfield, and then you have a Balde giving you a little bit width, Rafinha and Pedri in between। तो 3-3-3-1 हो सकता है, and this is quite possible while in play, absolutely। and yes guys, 75 people of you watching from the last 10 minutes, everyone let's hit that like button, big up to Pudin and everyone reminding that 4-4-2 is very possible because of lack of left wing and Balde will play that role in transition। okay, that could be possible, लेकिन पीयूष मुझे बार बार वही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार even if basically someone comes as a right back, the possibilities of that guy starting up front as a right back मेरे लिए कम है। I think he would rather rely on someone who's been tried and tested। The back, remember, BSEK is what he would go with, and that's what Balde, Araujo, Christensen, Kunde। While in defense, मैं agree करता हूँ, while in defense they'll become a 4 at the back with Balde, Araujo, Christensen, Kunde behind, and then you have basically almost like a 4-3-3 with Gundogan, Amrabat and De Jong and Rafinha, Pedri, ये भी हो सकता है। तो ये चीज देखिए मैं डाउनलोड करके रखता हूँ, यहां पर मैं आपको बोल रहा हूं दिस थिंग माइट चेंज इनटू अ 4-3-3 एज वेल while you're defending। so this could be, let me put it to you, and by the way thanks guys everyone who's praising the stream भाई, we all try something new in our channel all the time, we do new। हम वो घिसा पीटा क्लिक बेट्स में बिलीव नहीं करते मेरे भाई, तो किसी को ऑफेंड होना तो हो सकता है। ऑन ऑलमाइटी स्पोर्ट्स एज वेल एज ऑलमाइटी ब्लूज आप देख सकते हो, there's something always down for the people in the chat to give their views on। but anyway striker Lewandowski, तो यहाँ पर देखिए
इसमें क्या हो जाएगा, लेफ्ट विंग में वी विल हैव पेड्री, ठीक है, राइट विंग में वील हैव रफीनिया, because we are assuming he starts because of the defensive work on the right wing. Then you have a left central midfielder, it might become Gundogan, ठीक है. राइट सेंट्रल मिडफील्डर किधर है भाई मेरे, फ्रेंकी के जगह हम डाल देते हैं आम्रबात, ठीक है. एंड Amrabat is actually likely looks like it as well as Gundogan. Right central midfielder मुझे लगता है it, and Gumaresh is definitely clickbait as of now. Let me tell you honestly. Right central midfielder अपना कौन बचा यार, फ्रेंकी, मेरा भाई फ्रेंकी को डाल देते हैं जल्दी से. And I'm coming to the chat one minute. Left back obviously will be Balde. ठीक है, this is basically in transition into defense. ठीक है, so this is what it will be tactically. आप देखो तो it is a 3-4-2-1 changing into 4-3-3, but also it could become a 4-2-3-1 basically. Agar if you're going with Dembele, then it might become a 4-2-3-1. तो भाई I hope this is something which makes sense. एक सेकंड मैं स्टॉप करो शेयर करना, एंड देन कमिंग टू द कमेंट्स एवरीवन. बिल्कुल भाई, बिल्कुल स्टेप अप स्पर्स, विल कम टू स्पर्स एज वेल, एब्सोल्युटली हम करेंगे ईपीएल एज वेल एज ला लीगा, दोनों ही के लाइनअप्स, टैक्टिक्स एटसेट्रा, along with transfer news based on them. But definitely, how good is Vitor? Okay, he's a sensational possibility है, लेकिन अभी के लिए मैं नहीं बोलूंगा एज अ स्टार्टर. Of course, he's just what 18. So him along with Endrick generally for Brazil will be fighting it out for that number 9 spot in the long run. मुझे लगता है that in Vitor okay is someone who will be good come next calendar year. Abhi is calendar year I really doubt that he will be basically starter. He might be an impact at best. And yes, let's get to 100 likes quickly, guys. Arey, step up Spurs. Thanks bro. Matt's back, Pedri, Gavi, Frankie de Jong, गुंडो, देम्बेले, लेवा. नहीं, बार्सा यूनिवर्सल दैट्स अ बिट टू अटैकिंग. हाँ, अगर आप जा रहे हो जैसे 4-2-3-1 जैसे मैंने बताया था इन द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रीम, आई एग्री विद यू 100%. Mexican right back Julian Araujo, हाँ, लेकिन again he will not be a starter. I will be surprised. 3-4-3 diamond mid is effectively a 3-3-3-1. Exactly, that's what I was trying to say. This will definitely become a 3-3-3-1, which is quite possible. So we are talking about 4-2-3-1 एज अ स्टार्ट अगर खेलता है देम्बेले, ठीक है, और अगर आपके पास एक राइट बैक आता है विच अभी के लिए लग रहा है जेरेमी फ्रिम्पोंग माइट बी अ डुएबिलिटी अलोंग विद फ्रेस्नेडा, लेकिन विल ही स्टार्ट, आई डाउट. इसलिए वी आर गोइंग विद बेसिकली जो आपने बोला सब लोग ने, वी आर गोइंग विद समथिंग लाइक अ 3-4-2-1 which transitions into a 3-3-3-1 while in attack, or a 4-3-3 while in defense. Yeah, why not? Absolutely. अरे भाई बेगा भाई अभिषेक क्या हाल है, सब लोग यार, सब लोग, do not forget to hit that like button. Vitor Roque is definitely not a starter. Exactly. चलो भाई, हमने बहुत बातें करने. First 20 minutes of the stream we have done Barcelona. एक ला लीगा क्लब हो गया. We'll come to Real Madrid for sure. Do not forget, and there are a lot of transfer talks वहां पर भी. अरे सादिक भाई का सुन लेते भाई, आपको टेक्निकली बात करें तो सादिक भाई opinion is needed. The future number 9 of this Enric Roque generation would be a third person by the name of Marcos Leonardo. He is the one who balled at this under-20 World Cup as well. That's a good point, absolutely. Or in behind, Sadiq bhai, Andre Santos, hopefully. Let's see. Explain how Bellingham will fit in Real Madrid. उस पर आएंगे, absolutely आएंगे, definitely आएंगे. अभी थोड़ा सा let's get back to the Premier League and then we'll come back to La Liga. We'll be shifting, ठीक है? तो let's go to Chelsea, bro. Come on. पहला बारसा को दिया चांस, सेकंड चेल्सी आ जाएंगे, देन विल कम बैक टू अनदर टीम ऑफ प्रीमियर लीग एंड देन अगेन रियल मैड्रिड. ठीक है, एवरीवन अग्रीड? ओके, लेट्स गो विद चेल्सी नेक्स्ट. और भाई बहुत सारे स्टोरीज है वो चेल्सी, दैट्स व्हाई वी हैव टू कवर दैट बिकॉज़ मोर आउटगोइंग्स देन इनकमिंग्स. बट भाई जैक्सन ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड. जैक्सन इज कमिंग गाइस. But will he be a starter? That's a big question. And what will Pochettino play? Remember, जो हमने tactically बताया था, along with I think Saransh थे in the stream, और हमने clearly बताया था what Pochettino plays. He likes aggressive pressing. He likes in between the lines वाला game. He likes basically his fullbacks to bomb on. So with that, can we expect like a narrow lineup? I think we can. We can expect a narrow lineup, in my personal opinion. Andre Santos needs to go on a Casemiro, Jim regime. होगा सादिक भाई, होगा बंदा technically excellent. I think he almost, मतलब सादिक भाई, for me he is very similar to a Bellingham. I don't know if you disagree, but I feel it's very similar to a Bellingham. He has that potential. Let me see. Welcome Jackson for sure, and we have to welcome him. और मैंने ABFC members group में अभिषेक मैंने बताया ही है for everyone who do not know. और मैंने लास्ट वीक से बताया, देखिए द गाय इज गुड इन द लास्ट 5 months ही इज डन ब्रिलियंटली, फेयर इनफ. बट वो बेसिकली, आर यू टेलिंग मी दैट दिस गाय इज प्रूवन इनफ टू स्टार्ट इन चेल्सी? चांस देना पड़ेगा, बट डू वी हैव टाइम? डज पोचेटिनो हैव टाइम? डज स्टैमफोर्ड ब्रिज हैव द पेशेंस? आई डोंट थिंक सो.
बट अगर वो आ रहा है, डज इट मीन दैट दाविद फफाना एंड ब्रोया विल बी लेट गो? बिकॉज इन अ सीजन जहां पर हमारे पास चैंपियंस लीग फुटबॉल नहीं है, रिमेंबर एनकुंकू इज योर थर्ड चॉइस स्ट्राइकर, क्योंकि ही कुड प्ले दैट एज अ फॉल्स नाइन. तो एनकुंकू इज योर थर्ड चॉइस स्ट्राइकर, ही इज नॉट योर स्टार्टिंग स्ट्राइकर इफ आइडियली स्पीकिंग. आपका सेकंड चॉइस स्ट्राइकर विल बी निकोलस जैक्सन, हु इज कमिंग. यस, फॉर पीपल आउट देयर, डेफिनेटली ब्रेकिंग न्यूज, ही इज कमिंग फॉर श्योर. And there has to be a starting striker. What is more realistic based on the transfer news? हम उस पर बात करेंगे. ओके, कैसेमिरो गुमारेश हाइब्रिड, ओके, इंटरेस्टिंग दैट सादिक भाई. तो यहाँ पर देखते हैं, मानव का आ गया है यहाँ पर लाइनअप, और ईथन भी बोल रहे हैं 4-2-3-1. देखिए, 4-2-3-1 is, but it will be a narrow 4-2-3-1 in my opinion. I don't think Mudryk etc. will be starting as much as you would ideally like it. एक सेकंड, मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेकंड दीजिए मुझे. 4-2-3-1 राइट. चलो, चेल्सी का हम 4-2-3-1 कर रहे हैं. हाँ, आई थिंक नैरो 4-2-3-1 ही होगा. तो गाइस, ये देखिए लाइनअप बनाते हैं अब चेल्सी का. और बाय द वे, मेंडी टू आल अहली इज हैपनिंग ब्रो एवरीवन. आल अहली जा रहा है, कुलीबाली जा रहा है, इतने सारे आल यार. सॉरी गाइस, अरे सऊदी अरेबियन फैंस, लेकिन मैं मुझे चेक करना पड़ता कौन सा आल है भाई. आई एम नॉट गोइंग टू क्लेम दैट आई एम अ सऊदी अरेबियन एक्सपर्ट ब्रो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम. ऑफ कोर्स एन एशियन क्लब, सो वी हैव टू रिस्पेक्ट देम इवन मोर सो. लेकिन कहाँ जा रहा है भाई, मैं चेक कर रहा हूँ क्विकली. कुलीबाली आल हिलाल जा रहा है भाई. आल नसर जा रहा है विद रोनाल्डो अपना जियश. कुलीबाली के लिए भाई 30 मिलियन यूरोज एटलीस्ट मिलने चाहिए, इन माय ओपिनियन. दैट इज व्हाट आई वुड से. मेंडी के लिए कितना मिलना चाहिए आप लोग बोलिए, एंड जियश के लिए भी आई थिंक अराउंड 30 मिलियन यूरोज मिलने चाहिए कम से कम, इन माय पर्सनल ओपिनियन. ठीक है, दैट इज द मिनिमम दैट वी शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम द सऊदी अरेबियन क्लब्स. केपा सीम्स नॉट बी स्टार्टर. आई थिंक यहाँ पर केपा तो आएगा, लेकिन ऑब्वियस वाले डाल देते हैं. चलो, गोलकीपर में खाली रख रहा हूँ. आई नो हम लिंक्स किए हैं काफी सारे. ऑब्वियस वाले पहले डाल देते हैं. सबसे पहले चिलवेल को डाल देते हैं. ठीक है, चिलवेल और रीस जेम्स. मतलब मालो कुछ तो आ रहा है, ही विल नॉट बी अ स्टार्टर. ठीक है, सेंटर बैक, एक सेंटर बैक तो भाई प्रिटी श्योर यहाँ पर नहीं, आप लोग शायद श्योर नहीं, विल टॉक अबाउट दैट. सीडीएम और अदर नंबर 6, एक तो भाई एंजो फर्नांडिस इज ऑब्वियस. एंजो फर्नांडिस, ठीक है, एंजो फर्नांडिस डाल दिया. और मैं आ रहा हूँ चैट पर. दिस इज अ कैम इज अ क्वेश्चन मार्क राइट नाउ, हु आल्सो प्लेज लाइक अ नंबर 8, नॉट लाइक अ नंबर 10. नाउ यू हैव नैरो वाइड फॉरवर्ड्स कौन होंगे? आई थिंक यहाँ पर, एज मच एज वी डोंट लाइक इट, I think Sterling starts, and I think as much as we would want Madueke to start, I believe, considering the pressure in Chelsea and the fact that he's been managing PSG as well, I fear that Nkunku, fear क्या गोडी है, Nkunku will start and यहाँ पर स्ट्राइकर. तो भाई ये खाली पोजीशन है, यहाँ पर चैट का हम लेंगे. ठीक है, ऑब्वियस वाले में डाल रहा हूँ, ये लोग डेफिनेटली स्टार्टर्स है. 1 2 3 4 5, आई थिंक दे आर डेफिनेटली स्टार्टर्स, नो टू विज. ऑल्दो आई वुड नॉट लाइक टू सी स्टर्लिंग स्टार्ट, बट वो रियलिटी है, इट इज रियलिस्टिकली अ स्टार्टर एवरीवन. और भाई सब लोग जो भी है लाइक बटन दबा दीजिए. वील टॉक अबाउट ऑल द अदर क्लब्स एज वेल. 20 to 25 मिलियन बोल रहे हैं अभिषेक. ओके, सऊदी इज द ओनली प्लेस वेयर यू कैन सेल योर प्लेयर्स ऑन अ प्रॉफिट. लेकिन वही है ना, अगर कुलीबाली और मेंडी और जियश के लिए प्रॉफिट नहीं आ रहा, देन व्हाई आर दे गोइंग देयर? ओनली फॉर देयर पर्सनल ग्रोथ, व्हिच इज नॉट रियली ट्रू इन माय ओपिनियन. व्हाई वुड especially Ziyech go there? Ronaldo, yes, great, but come on, man. I think if we don't get a good fee, it's not no point of them going. Lekin it's likely. You are technically owned by them, Saudis, on the real loophole to own multiple clubs without any legal hassle. Baapre. Yeah, you can, but the thing is, Todd Bowley kahin na kahin, and Iqbali and all have done that, right, to themselves. Basically, we have bought so many players, Sadiq bhai, that only club in the world or other clubs in the world are Saudi clubs who can take so many players at once, or these players are ready to go. Especially a Koulibaly, Kante, Mendy kind of culturally also not very different, and I think Ziyech as well. Or but Lukaku on the other hand doesn't want to go. But the guy that we want to go is not going. क्या बोले यार? Kepa might start according to rumors. Yes, देखिए गोलकीपर की बात कर लेते. देखिए, we were interested in Onana, लेकिन all of a sudden looks like Manchester United is a real possibility based on obviously the new owners etc. Right? Then or again 45 million है Onana का fee if I remember right. Then you have Manion by 80 million. नहीं आने वाला. I'm telling you guys, we're not going to do another Kepa again. That's more realistic. As much as I don't want AC Milan also to sell, but at the same time Manion चाहेंगे आप नहीं. It's not realistic for me. As much as Manion खुश नहीं है Maldini जाते हुए, I feel he might just stick around. Then the Valencia goalkeeper, does he up a better Kepa? Probably not for sure right now, because Kepa knows Chelsea. Arguably he was decent as well, not too bad as previous seasons before. और कौन है भाई गोलकीपर?
Emi Martinez, again, not realistic. वो जाएगा, छोड़ेगा तो he'll go for a Champions League playing club, in my personal opinion, as much as he's Argentine and Poch is Argentine as well. भाई बाकी बचा कौन? मतलब यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड पिकफोर्ड के साथ भी लिंक हुई है, तो मे बी ओनाना माइट बी पॉसिबिलिटी, बट अभी के लिए वील गो विद व्हाट इट इज. भाई मेसी इज गुड, इट्स अ क्लिक बेट माय ब्रो, इट्स अ क्लिक बेट. ट्रस्ट मी, इट इज नॉट हैपनिंग. अभी के लिए इट्स अ क्लिक बेट, इट इज नॉट हैपनिंग माय ब्रो. People do not go with clickbait. Bruno Guimaraes and Trippier are two people that Newcastle built their rebuild on. They will not let go these people, and especially for Rafinha, who is good, but he's not world class as of now. He has the potential to be. It's not happening, guys. Do not go with clickbait. I again warn you. As of now, it's a clickbait. If it changes, I'll be the first one to tell you I was wrong. Okay. Nkunku will be number 10. How? Basically, we play with two number 10s, right? Just like Barcelona, we're going to play with two number 10s, Manav. And I don't think he's like a proper number 10, which is a direct number 10, a single man number 10. He is more like a wideish number 10, and I think he's good in dribbling. I would rather want his, skills there to be taken. Say my name, thank you, bro. Nice name, by the way. बाडेशिल एंड थियागो सिल्वा बोल रहे हैं पुतिन. चलो भाई, यहाँ पर देखिए, as much as I would like to put, I have a logic वहां पर. मुझे लगता है, and I know यहाँ पर Colville is something that he can become the future centre back for sure. As of now, I don't think he starts, considering Badeshil has been there, done that for a few games, and he's been quite good. Let's be real about it. हाँ, along with Thiago Silva is better, वो clear है. लेकिन Thiago Silva turns 39. Would you pin your chances here? He will be a starting center back and the main center back for the season. As much as I would like it, we need leadership. The realistic aspect is nahi. हमने spend किया 80 million भाई for this guy, and I think as much as I don't like him, मैंने खुद गाली दिया, he was a fraud in the last couple of months after the Vinicius meet. भाई लेकिन Fofana, in my personal opinion, will be starting with his Frenchman colleague Badiashile, in my personal opinion, and यहाँ पर Kepa ही शुरू करेगा, as much as we do not like it. अब that means that the midfield position, obviously, there has to be some amount of leadership, but the realistic aspect is it's a double pivot, and Caicedo is good in that. So I think Caicedo plays there, or striker, the striker, and that's one of the reasons why Sterling is there, because he has some amount of leadership per se. तो डेरेन का देख लेते हैं. डेरेन बोल रहे हैं केपा, रीस, सिल्वा, बाडेशिल, चिलवेल, एंजो, काइसेडो, स्टर्लिंग, एनकुंगू, मडुवेके, व्लाहोविच for me. I think Madueke will be an impact sub to begin with, in my personal opinion. I might be wrong, but that's what I'm saying. Onana, Kepa, one of them for sure. James, Thiago, Badiashile, Chilwell, Enzo, Caicedo, Mudryk, Nkunku, Madueke, Vlahovic, or Jackson. Mudryk needs to start. We got to play wide. Lekin, I'm just going with the Pochettino, what he likes, plus the fact that we hardly have leadership here, or generally experienced players in the team. So मुझे लगता है Sterling is a no-brainer, Abhishek. I know, eventually he will. Eventually देखिए, Madueke, Mudryk दोनों खेल सकते हैं with maybe we'll go with a 4-2-3-1 with a proper number 10 like an Nkunku. ठीक है, वो हो सकता है eventually, and we'll show that. जैसे बारसा का हमने दिखाया था, चेल्सी का भी दिखाएंगे अभिषेक. I'll show you that lineup as well. और Onana, Chile, okay, Badiashile, Colville, Reece James, अच्छा Badiashile, Colville, two left-footed centre backs बोल रहे हैं, interesting. Reece, Enzo, Caicedo, Nkunku, Mudryk, Madueke और Broja. Keylor Navas भाई लिंक नहीं हुआ है. Onana, I think I am not going to say that he's coming. Arey, DJ Sam in the house, bro. One of the OGs of the channel, bro. Big up to DJ Sam, man. Absolutely. Yes, Mamadashvili, I don't think is starting. Stolina is not starting, absolutely. Many big players are refusing Saudi offers too. Those who are more ambitious than greedy, players like Bernardo Silva, Gundogan and all refuse. नहीं एक Lukaku भी है भाई. Lukaku का क्या बोलेंगे? Messi is good. So I think it depends on the overall package as well. David Raya Spurs जा रहे हैं मेरे भाई. Raya or Kepa, I think Kepa is better. People might disagree. I feel Kepa is better than Raya because he's just proven at the highest level a little bit more compared to. ज़्यादा difference नहीं है लेकिन. I think Onana will come. Yes, even I feel, लेकिन अभी as things stand, yes, maybe in the end Lukaku शायद जाएगा. You know what, Ganesh, I think I am kind of tempted with Pickford to United. Should I just put him? I think he might actually. Or considering जो Eric Ten Hag versus Onana हुआ in the past, you know what, डाल देते हैं. And I feel that Lukaku का हम बात करें, Lukaku कहीं ना कहीं तो जाएगा यार, चेल्सी में नहीं रहेगा. Come on guys, let's get that right. और ट्रांसफर विंडो बहुत बाकी है. यहाँ पर हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, एज वेल एज बेसिकली रियलिस्टिक ट्रांसफर्स बोल रहे हैं एज पर द न्यूज. ओनाना अभी भी इंटरेस्ट है, ऐसे नहीं कि डिसइंटरेस्टेड एकदम. It's just that because the Inter Milan ने क्लियर मना कर दिया, we don't want to do business with them about Koulibaly and Lukaku. But eventually I'm 100% sure that one person one exchange वाला होगा plus cash.
or that will be Onana. I think Lukaku needs to go permanently. Exactly. Fabricio has said, and अगर आप कंपेयर करोगे तो भाई I would definitely take Fabricio's side with Newcastle news. फोफाना भी अच्छा है, yes, फोफाना भी अच्छा है, लेकिन अभी के लिए अच्छा नहीं कर रहा. The report was first leaked, हाँ, कोई नहीं. भाई I would go with the Fabricio on Newcastle news, bro. Anyway, and as just on Fabricio, you can trust me, bro. Trust me, bro, is a source, man. Ankit, भाई हम भी कुछ जानते हैं, हम घंटा नहीं जानते all the time, मेरे भाई. Messi is good, big up. लेकिन फ्रॉड फफाना, लेकिन कोई नहीं, अभी के लिए आई विल गिव हिम अ चांस. इफ चेल्सी इज गेटिंग Caicedo, who will cost around 90 to 100 million, then I don't think Chelsea will go heavy on a marquee striker. I guess Nicholas is the one they will go ahead for the striker position. नहीं, मेसी इज गुड, हम बेच रहे हैं यहाँ पर. आप गिनती शुरू करिए मेरे भाई सब लोग. Chelsea are selling who all? Everyone, you all remember? Chelsea are selling who all? They've already sold Kante, ठीक है. कोवाचिच मैन सिटी जा रहा है, मैन सिटी के 11 में भी आएंगे एब्सोल्युटली. कोवाचिच, देन मेसन माउंट मैनचेस्टर यूनाइटेड के लाइनअप में भी आएंगे. हैवर्ट्स आर्सेनल के लाइनअप में भी आएंगे. देन यू हैव हु एल्स, मैं भूल रहा हूं भाई, मेंडी, जियेश, कुलिबाली, ठीक है. ऑलरेडी सो मेनी प्लेयर्स, एंड दीज आर लाइक प्रॉपर 7 प्रॉपर प्लेयर्स, एंड यहाँ पर हर एक बंदा एटलीस्ट 10 मिलियन लेंगे. ओबामयांग, ठीक है, इतने सारे लोग. ओबामयांग गोइंग टू सऊदी एज वेल. तो इतने सारे, I think कचरा खेलेगा पुदिन पुष्रे नहीं. Gallagher I think will remain, as much as he's heavily linked with a lot of clubs including Crystal Palace, Newcastle, Tottenham, West Ham, Brighton. 5 clubs से link है. I think that's the thing. Okay, so maybe he starts in the middle to begin. That's a possibility as well. लेकिन does Gabri Vega start even if he comes? I don't think so. Gabri Vega might come in my opinion. Yeah, again, मतलब the only reason I'm putting it out there is because Manav, David Raya has done that for a season, and Kepa has done that for a season and a half. 1 season between, really bad. Jackson as a striker for Chelsea seems more realistic than Vlahovic. नहीं, I think हम करीबन Loftus-Cheek भूल गया. Exactly, Loftus-Cheek to Milan and Pulisic to UA. तो भाई these might be actual sales. सब मिलाकर, भाई मैं झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ, सब मिलाकर 150 मिलियन बनते हैं भाई मिनिमम. 10 प्लेयर्स बोल रहे हैं यहाँ पर, 150 मिलियन बनते हैं, ज्यादा ही बनेगा मेरे ख्याल से. तो इमेजिन, are we really telling that Chelsea will not buy at least 3 players? I think we will. 3 is absolutely minimum Chelsea को buy करना है. 1 midfielder, ideally 2. Romeo Lavia will also come in my opinion, not going to Arsenal. I think Partey will stay there, or Romeo Lavia or Caicedo, दोनों Chelsea आएंगे. Then you have Onana, hopefully with an exchange plus money, or of course one more striker apart from Jackson will come. I think totally we are talking about 5 signings with 3 starters with 10 people going away. नहीं, जेम्स मैडिसन नहीं आ रहा अनफॉर्चुनेटली. डेरेन, द न्यूज आई एम जस्ट गोइंग थोड़ा रियलिस्टिक. आई थिंक ही इज more strongly linked, or better sources are telling me that he might either go to Newcastle or Spurs. तो उस पर देखते हैं. Lefty is cheap, yeah, but I don't think again he will be a starter if he comes. That's what I'm saying. Same thing with the Leon guy. What's his name? Cherky? What's his name? I don't think Lucho is a good coach. Well, I think he is a decent coach, but again, time will tell whether he can do it PSG. Chalobah and Chukwuemeka, yeah. Chukwuemeka, Chalobah, उसने बोला है he likes Inter Milan, he likes basically Milan, everything. So I think he's going to Inter Milan, as much as I don't like to see that. But I don't think Jackson is going to start. भाई Cam यहाँ पर बोल देते हैं. The guy who is going to start in Cam position is interesting. Who is going to start? That is the biggest question. तो with Nkunku there, भाई सब लोग बोले Cam में किसको? People might not like me saying it. This is the only option we have right now. Oh my God. Bhai, Gabri Vega will start eventually. People will be shocked that I'm putting his name. This is something which I'm actually seeing. So you have almost like a 4-3-3 or a 4-2-3-1. Kachra खेल रहा है भाई. अरे भाई, as much as I like him at times, but he's not a starter. होना नहीं चाहिए. मैं realistic बोल रहा हूँ. Gabri Vega, if he comes, is he starting right away? Probably not. और वो आएगा, मुझे लगता है वो भी आ सकता है. जाओ फिलिक्स, हम नहीं जाएंगे एनिमेशन, नहीं जाएंगे. Gallagher is staying, looks like it. Mount, Koulibaly, Kai, 120. Now you get a Caicedo. नहीं, तो भाई 10 प्लेयर्स नाम किया. Messi is good. भाई 10 प्लेयर नाम किया, वापस रिपीट नहीं करा मेरे भाई. बिग अप. नहीं, आई डोंट थिंक ही स्टार्ट्स. और देन आई थिंक थोड़ा सा श्योरिटी चाहेंगे वो विद a third man in midfield, and that could be Gallagher. That's what I'm putting it. To begin with, remember Pochettino will come with a lot of pressure. Striker situation, and I think I'll be brave enough to say that Vlahovic. I know Lautaro Martinez is what
our friend Pochettino would want, but वो realistic नहीं लग रहा, and that is why Lukaku will go to Inter Milan because of the fact that he likes to play with Lautaro, and Inter Milan also like that way with Onana coming the other way. तो मैं बोलता हूँ Pulisic will go to Juventus and Vlahovic will come. I think this looks likely in my opinion. Vlahovic is around 70 million with Pulisic. I think वो कम हो सकता है. By everyone in the house, ये बोलिए, is this realistic or not to begin starting 11 start in season 2023-24? Eventually, Gabri Vega will take Gallagher's position. तो भाई ये मैं डाउनलोड करके रख रहा हूँ, but I'm changing that to the mid season तक ये हो जाएगा before the next window. This might actually change, and we might go with a wideish formation when everyone is sure of the positions and Pochettino knows his players, क्योंकि हमें width चाहिए और in my personal opinion. And यहाँ पर Nkunku might actually be कहाँ है भाई अपना गैलेगर के जगह आप इंकू को डाल देते तो गैलेगर को स्टार्ट नहीं करवाएंगे बाद में और यहाँ पर आई थिंक इवेंचुअली मुड्रिक hopefully he'll get the confidence that is needed in the few games that he gets, or right wing I think Madueke might come in because I don't think Sterling is cutting any trees. Yeah, I think this looks more likely. Everyone, Sterling might be replaced exactly with Madueke. Madueke start eventually. Remove Gallagher. हाँ, Gallagher को हटा दिया और I think once Caicedo or Enzo are comfortable in terms of chemistry they have, it will be basically a case wherein you have Nkunku starting as the number 10. भैया कुछ भी करके कैपा सेल कराओ. भाई कैपा का एक चीज जरूर बोलूंगा, एज मच एज वी वुड वांट टू सेल, मेंडी सेल हो रहा है, हम दोनों को सेल नहीं कराएंगे. स्लोनिना एज अ नंबर 2 डजंट मेक सेंस बिकॉज़ एट दैट एज यू वांट मोर गेम टाइम. कैपा इज समवन जो चिक चिक नहीं करेगा सिटिंग ऑन द बेंच. वी ऑल नो दैट, वी हैव सीन दैट. Nicholas Jackson will be your starting 11 soon enough. I think it could be as well. ये मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, but I think अगर Nicholas Jackson proves it in the few matches that he gets, I think अभी ब्रोया और दावेदार तो फॉफन नहीं डाल रहा क्योंकि मुझे लगता है it's clear if Jackson is being signed, one of them two or both of them are going on loan or getting sold. As much as I would not like it, Jackson से मैं impressed too, but I don't think is good enough to start right now in Chelsea with our ambitions. लेकिन who knows, if he does what is expected or exceeds expectations, why not? Jackson starts, man. This might be a possibility, and Jackson is coming for people out there who just joined the stream. Not Sterling, Madueke को रखो अंकित भैया. हाँ रखा है ना स्क्रीन पर, सुप्रीम शिष्टा देखिए आप. दिस इज द इवेंचुअल लाइनअप. मैं पहले किया था द स्टार्टिंग 11, सेम चीज हम बारसा में भी किए थे. स्टार्टिंग 11 जो शुरू करेगी सीजन, एंड देन द इवेंचुअल लाइनअप व्हाट दे विल गेट इनटू इन गेम्स. इट लुक्स डिसेंट. चलो भाई, आई थिंक दिस इज व्हाट वी आर सेइंग फॉर चेल्सी. गाइस, where will we finish with that squad? तो बेसिकली हम बोल रहे हैं 10 लोग का सेल करेंगे चेल्सी ओवरऑल, 5 लोग को बाई करेंगे. among those 5, 2-3 will be starters. Fair enough? Okay, DJ Saab will take a comment, bro. Ankit, Jackson will not be a number 1 striker, bro. I agree with you. That is why I think that Lautaro, as much as my man Pochettino wants him, is not realistic. With Lukaku should go, and we all believe it. We are in agreement with that. So hopefully we'll get Onana, and with Pulisic going to Juventus, hopefully we will get Vlahovic, because Vlahovic does not start every game for Juventus. So I think it'll be a straight battle between Vlahovic and Nicholas Jackson. Remember, both are actually fairly young. We forget that. And you have the third option in an Nkunku or a Sterling who could play a false 9. We are still looking at bringing a main man striker. Vlahovic, Osimhen, and Lautaro will be the one. Exactly. Osimhen, I really doubted. DJ Saab. We're not going to do another Lukaku. As much as he's good and I rate him, he's a Chelsea fan. Lukaku was a bigger Chelsea fan. We all remember that, don't we? And what happened, we all know. I know everyone is not Lukaku, but spending 120 million, I don't see that. Even Kolo Muani, I don't see that happening. Anup bol rahe 8th आएंगे. अरे बाप रे. Let the hopes be less. That means that we'll exceed expectations. नहीं, हम यूरोप तो लाना है यार, कैसे ना कैसे. Wouldn't mind Jackson in place of Vlahovic. Yes, I think they will both compete for that spot, in my opinion. Bro, yeah, pretty sure with Jackson coming in and we going for another striker like a Vlahovic, Animesh, Broya is not going to stay as a third striker, is he? मुझे लगता है Caicedo जब आ रहे हैं, I think Broya might go, although that has been said no as of now by Fabricio. लेकिन मुझे लगता है eventually after 10 days जब वो negotiations वापस होंगे ना, I just feel that personal terms agree करना एक चीज है with Caicedo, but I think we need to give away someone. We don't give a Colville, we don't give a Gallagher, we give Broya. Why? Because Broya becomes a third choice striker, which is not what Broya deserves, as much as I like him.
But 100 likes, come on, let's get there. Absolutely guys, क्या बात है भाई, सब लोग likes button देख, 150 like है target का, थोड़ा सा target है. तो guys, we have done Barcelona, we have done Chelsea. Of course, there's a lot of connect with Chelsea and Arsenal as well as Man City this time. Man City doing a lot of changes. So can we do Man City, the European champions? That feels strange, bro, but it's true. Man City are the European champions and treble winners, bro. Burnley interested in Broya, yeah. He might go to Burnley or Brighton, anywhere. What do you believe? It might be right. I genuinely believe Broya selling him will be a huge crime in my opinion. But anyway, let's see. Maybe I'm wrong. Man City क्या formation खेलेगी भाई? Will they change the formation considering इतना sale कर रहे? I don't know about that. Will they change it? Or will they just keep it the same thing, 3-2-4-1 or 3-4-2-1 is what they will continue? Or maybe they will play with two strikers. I think, you know what, Man City आप देखोगे कुछ changes. I think there might be some changes considering that Bernardo Silva to PSG is quite likely, or Mahrez to Saudi is quite likely. They might not have forward wingers. Wow, that seems new, but I think Grealish might play that role still, in my opinion. Let's see. भाई Madueke ये क्या ब्लड्स का है या क्रिप्स का? Not sure if I understand that comment, mere bhai. If anyone can, explain me, it's great. Mantra, thanks for the super chat, my bro. Always helps. But let's get to the next one. Man United bhi karenge. Licha, of course karenge. Licha, definitely karenge. Bhai, again, people who have lost their membership, you can definitely, definitely go and do it manually again. I believe automatic nahi ho raha, but big up to everyone here. My man replaced Benzema and Asensio with Joselu, and we have Real Madrid pa आएंगे. चलो quickly करते हैं. Too early to predict for us. A lot of ins and out are yet to happen. If we get good fullbacks, we can revert to a 2-3-2-3. All depends on the summer. It's an early prediction, guys. Manav, based on the news or based on what Pep does, I don't feel that Pep is hesitant to change his formation anytime, and that is Pep Guardiola for you. भाई यहाँ पर मैं कर रहा हूँ. So I think it'll be like a 3-2-3-2. I think it might be a 3-2-3-2 for Man City. I just feel that might be the realistic thing. तो 3-2-3-2 हम कर रहे हैं मैन सिटी का. एवरीवन, आप मैनचेस्टर यूनाइटेड रियल मैड्रिड में भी आएंगे. एब्सोल्युटली. थोड़ा मिनट रुक जाइए मेरे भाइयों. तो यहाँ पर इट इज. तो इन गोल ऑब्वियसली यू विल हैव एडिसन, और देन यू हैव सेंटर बैक्स. दे पिक देमसेल्व्स, राइट भाई. एज मच एज आई वुड लाइक टू से Aki does not deserve to be dropped from the starting 11. थोड़ा धोखा हुआ है बंदे से. Guardiola आ रहा है. Let's be real. Man City have a lot of money, plus the fact that they're selling a lot of players. They will get Guardiola, in my opinion, as much as बहुत expensive है. Right center back, I think will it be Stones now or no? It will still be Akanji. I'm guessing Akanji ही रहेगा. And I think right center back Akanji is obviously better than Aki, who's left-footed. Center back you have a Ruben Dias. ठीक है? Everyone, backline agreed. Guardiola, yes. Guardiola, Diaz and Ake बोल रहे हैं. हाँ. Considering Ake and Guardiola दोनों left-footed है, I feel Akanji is proven enough. Exactly. 3-2-2-3. हाँ, मतलब इन गेम वो भी हो सकता है. लुकाकू का करंट मार्केट वैल्यू, मैं नहीं, ट्रांसफर मार्केट .com बोल रहा है भाई. 45 million if I'm not wrong. यूरोस की बात हो रही है. 40 million pounds. I think if we get even 30 million pounds at this point in time, I will take it, to be very honest. Will Alvarez get more games? Exactly, I'm coming to that point, Aman. Absolutely. तो भाई यहाँ पर देखिए, Stones, I don't think there's a need to change that Rodri and Stones वाला double pivot. Then again, who will play Cam? Obviously Kevin De Bruyne. ठीक है, तो obvious वाले डाल रहे हैं. And Gundogan हमने डाला है बारसा में, remember. So यहाँ पर लेफ्ट मिडफील्ड में कौन होगा? Grealish has had a sensational season. I think continues as much as Foden बोलना चाहेगा, मैं भी हूँ मेरे भाई. यहाँ पर क्या बोलते हो, बर्नार्डो सिल्वा महारेज दोनों जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्या लगता है? मतलब यहाँ पर देखिए, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. हालैंड को डाल देते सबसे पहले तो भाई. People are surprised. I think it's time that he starts, bro. I think it's time he starts. I feel. Pre-season matches कब start हो रहा है? I think it's in just a couple of weeks, bro. But then obviously we'll keep you posted. भाई एवरीवन, क्राइटेरिया ये है कि अभी जो ट्रांसफर न्यूज आ रहे हैं, बेस्ड ऑन दैट व्हिच यू थिंक इज लाइकली, व्हिच इज नॉट लाइकली, वी आर क्रिएटिंग अ स्टार्टिंग 11 फॉर नेक्स्ट सीजन
as things stand and becoming a tactical manager for the timing for every club. We have done Barcelona and Chelsea as of now. We are doing Man City. We will come to Manchester United, Real Madrid, and the rest of the clubs, Arsenal as well as PSG, hopefully. So, by Palmer, does he start? I don't think. I think Bernardo is not leaving. Okay, we could see KDB playing a lot deeper and Alvarez. Huh, exactly. So KDB is someone who drops right from that position. So he does a bit of both. To be honest, Kovacic. Well, तो basically माना बोल रहे Kovacic might start. I disagree, bro. I don't think it starts. I don't think Kovacic starts. Kovacic जा रहा है, that is for sure. अरे मुसेबा in the house. 10 हमने नाम कर दे दिया मुझसे भाई, उसका भी करेंगे एब्सोल्युटली. गुड वन. बर्नार्डो वुडंट लीव फॉर पीएसजी इन ओपिनियन, फिर बारसा आई वुड. ओके चलो. तो आप लोग बोल रहे हैं बायर्न का टाइम रहेगा तो रहे करेंगे. बुंडेसलीगा एंड सेरिया as well as basically Liga. I was planning to do next stream. Agar time raha to we'll do it. I don't think it'll be time. That's what I'm saying. But big up to everyone, bro. It connects Bundesliga news though, definitely. So bhai Bernardo Silva ही रहेंगे is what we are saying. So I don't think Bernardo Silva leaves. Kyle Walker is going to Bayern. Yes, people. Kyle Walker मुझे लगता है will leave. Kyle Walker either will go to Bayern or to a Saudi club. I think Kyle Walker is leaving for sure. As much as he's done brilliantly in last few months, I don't think he's a fullback or a right back who will be starting every game for the entire season. Ankit, what do you make of Poch wanting to make Kepa his number one goalkeeper next season? I think DJ Saab, it's a reality that we do not get Onanas and the Manions, and Emi Martinez easily. So I think somewhere down the line, he's just wanting to back what we have. I don't think that he is convinced, and that is why there's no smoke without fire, and that's why we are linked with players, aren't we? I think Silva will leave. Mahrez will stay. Onstein posted Silva is considering other options. Okay, that's interesting. So basically, right wing में हम बोल रहे हैं one of them. I think दोनों नहीं छोड़ेंगे. That's the bottom line. So it could be Silva or it could be Mahrez. ठीक है? तो यहाँ पर मैं डाउनलोड करके रखा हूँ. It could be Mahrez as well. ठीक है? और अगर आप बोल रहे हो Kovacic शुरू करता है, then I think De Bruyne might actually play a wide role. That might be one of the options. Like for example, you have De Bruyne, but I don't think you want De Bruyne to come and defend, bro. That you do not want. And Kovacic is not a number 10. It'll be almost like a क्या बोलते हैं कोई और फॉर्मेशन है क्या? It'll be like this thing. ठीक है? नहीं, not this thing as well. और कौन सा? Yeah, something like this. ठीक है? तो this might be one possibility. थोड़ा सा narrowish with Kovacic being the runner who takes the ball and goes with the ball. ठीक है? That might be one of the things as well. So this is a possibility, but how Kovacic is going, as much as I hate saying it, is going to Man City, bro. Or Gundogan is going to Barca, from what I believe should be true. Everyone in the house, क्या बोल रहे हैं? Rico Lewis, yeah, that could be one option, but I think right now no. अभिषेक तो बोल रहे हैंड ओवर द प्रीमियर लीग ऑलरेडी. No, it's just createformation.com मेरे भाई योगेश. No app as such. लेकिन everyone भाई, we have finished 3 clubs again. Barca and Man City look better than Chelsea, let's be real, as things stand. लेकिन Chelsea का 11 doesn't look too bad, especially the formation जो हमने second बनाया था. I think first formation of City is better than the second formation जो हमने बनाया था. Barca का second formation is better than the first one. But now कौन सा क्लब करना भाई सब लोग? Manchester United. Should we do Manchester United, everyone? Should we do the other side of Manchester? Yes, it connects Chelsea as well as a couple other clubs. So let's do Manchester United. By Manchester United, कौन सा lineup खेलेगी? We'll come to Real Madrid next. ठीक है? Everyone in the house, Manchester United fans, neutrals, EPL fans in the house, do let me know what formation next season will Manchester United start with. In my personal opinion, it might be I don't know. Will it be a 4-1-4-1? It might just be a 4-1-4-1. Similar to how a lot of say Arsenal fans also would say they might do 4-2-3-1. Okay, because remember we are going to fit in Mason Mount there. As much as हम बज नहीं कर रहे in terms of हमारा मांग, let's be real, around 60 million pound में Mason Mount Havertz दोनों सेल कर लेंगे each in fact. तो हम बोल रहे हैं 4-2-3-1. नहीं, I don't think so. There will be as things stands, I think we say it's a 4-2-3-1, but I think he will change a little bit. I don't think he'll play with it. I think 4-1-4-1 seems more likely. 4-3-3 or 2-3-2-3. 4-3-3, चलो 4-3-3 में फिट करने की कोशिश करते हैं. Let's do a 4-3-3. हाँ, तो 4-1-2-3 basically. 4-1-2-3 basically आप बोल रहे हो ना?
4-1-2-3 मेक्स, हाँ 4-2-1-3 बोल सकते हैं या 4-1-2-3, योगेश और मानव जो बोल रहे हैं ना, मेक सेंस, दैट वन मेक सेंस, और पुजन भी बोल रहे हैं, चलो तो लेट्स गो विद दैट गाइस. So this is what it looks like. Manchester United, guys. Everyone, Manchester United fans or EPL fans especially, do let me know, and others wait for Real Madrid. Goalkeeper कौन होगा भाई? As things stand, क्योंकि हमने बोला है यहाँ पर जाने वाला है Onana to Chelsea again. It is only hypothetical, but this is realistic in my personal opinion. Pickford को डाला है मैंने directly in the goal and not David De Gea. Wow, guys, breaking news. Left back Luke Shaw continues. Right back. Who starts right back में? That's a quick. Let's keep right back थोड़ा खाली. I know दोनों have done well. Van Bissaka डालो. Center back, obviously Varane, Kim Min Jae. Eventually will go to Bayern Munich. We all know that, and that is why Disasi may not start. Who is coming to Manchester United? So we'll have Licha starting. Licha कहाँ हो आप भाई मेरे? Licha आ गए सेंटर बैक में, ठीक है. डालो विल स्टार्ट बोल रहे, चलो आएंगे राइट बैक आएंगे. नॉट पिकफोर्ड प्लीज, मुझे लगता है दैट्स लाइकली ब्रो, दैट इज लाइकली. कंसिडरिंग दैट ओनाना पिकफोर्ड दोनों यूर लिंक्ड. आई नो दैट डियोगो कोस्टा माइट बी वन, लेकिन बहुत पैसा है डियोगो कोस्टा के लिए. पिकफोर्ड के लिए इंग्लिश टैक्स लगेगा, बट पिकफोर्ड इज मोर डुएबल. किम टू बायन, एग्जैक्टली. और यहाँ पर ऑब्वियसली Casemiro, I think, might play a little bit deeper role considering his one more year added to his age. यहाँ पर you will have two midfielders kind of protecting him. And as much as Eriksen would like to start, let's be real, he would not start. Bruno Guimaraes should be a little bit right. Bruno Fernandes, sorry, Guimaraes भी बोल रहा हूँ. Bruno Fernandes rightish midfielder, and यहाँ पर you have a Mason Mount. ठीक है, is it a bit too attacking? क्या बोल रहे सब लोग? Need a good backup for Varane. I think Lindelof will stay, bro. मुझे Lindelof चिक नहीं करता है being a substitute. Lindelof, I think, mistakes है, but I think is good enough to be a third choice center back, bro. Disasi आ रहा है Maguire की जगह. Maguire will leave, obviously. Maguire किधर जा रहा है यार सब लोग? Mount and Bruno might be too offensive. Yeah, that's a thought. Pickford is not a better. इसलिए मैं बोल रहा था ना, the formation you might think about maybe a different formation. Pickford is not a better shot stopper than David De Gea and has little better sweeper keeper. I would rather David De Gea. Okay, that's a good point. But अगर Pickford आएगा, which is looking likely, he would only come if he starts, in my opinion. And David De Gea, I don't think he signed a new contract yet, has he, Animesh? The right back depends on the mid. If you play Mount, Bruno in midfield, I would fancy exactly Manav. Why Manav is reading my mind, bro. Big up to Manav, man. That is what I'm saying. Right back, in my personal opinion, as much as Van Bissaka spelling बोल दो यार कोई मेरे भाई. Van Bissaka. अरे यार. हाँ मिल गया finally. I think it starts. I don't think as much as Jeremy Frimpong, Barca or United दोनों interested थी. I think he probably might end up in Barca. Maguire going to second division of MSL if there exists one. नहीं क्यों नहीं करना चाहिए? Disasi is good, bro. He is certainly a long-term replacement for Varane, bro. Kenny, I think it's a good one in my opinion. Right back will be Dalo. नहीं इस formation में because we are going with Mount and Bruno Fernandes, I think Van Bissaka makes sense. Eriksen is better than my Mason Mount. Agree to disagree. Eriksen is very good, but Mason Mount defensively is better. Let's be real about it. और the fact is Mason Mount अगर जाएगा Manchester United, वो नहीं जाने वाला अगर वो start नहीं करता है. हाँ, you might have that opinion, लेकिन he will not leave. Just like मैंने पिकफोर्ड के बारे में बोला, वही चीज मैं मेसन माउंट के बारे में बोलूंगा. They will not go to Manchester United if they know that they are not starting. They will need that guarantee along with Chelsea getting a good price hopefully. Although मैं चाहता नहीं हूँ goes, but अब क्या ही तो बोल सकते हैं. But striker, forward सब लोग, everyone forwards बोलिए. Of course यहाँ तो no brainer, Rashford. ठीक है. Right winger, as much as he's not been there, I think Sancho starts. Or would you say, I don't think Greenwood starts as of now, although he got back into the squad. You have, maybe they will keep Diallo, lekin again, he doesn't start. Elanga, I think he'll leave. So I think Sancho only starts. Garnacho will be the substitute as well. Striker, and that is what Manchester United need. Sab log, who is most likely? Kane is unlikely in my opinion. Ozyman, you know what? Strangely, मुझे लगता है Ozyman might go elsewhere. Hoyland, I think that, but does he start? That's the whole thing. Anthony start करेगा. चलो Anthony डाल देता है. आप लोग Anthony बोल रहे तो हाँ, it's a huge buy as well. I know Sancho is also a huge buy, but I think Anthony starts compared to Sancho. हाँ, considering you have Van Bissaka defensive right back, then you have Bruno Fernandes and Anthony starts. I think makes sense. Definitely. Or right wing में I think is better than Sancho.
I agree on that. Lekin I think realistic, I think, yeah, I think Hoyland definitely, I think maybe has to be the striker. Of course, यहाँ पर अपने Weghorst is going, that's for sure. So I think Hoyland को डाल देते. I don't think Osimhen will be coming because remember, even if they get भाई हॉयलैंड, अरे यार कहाँ हॉयलैंड का रासमस है ना भाई, हॉयलैंड का नाम क्यों नहीं आ रहा? आ गया भाई, आ गया, आ गया. 19 euros starting. Wow. Eric Ten Hag playing with Colomwani. नहीं यार, देखिए, even if they get new owners, man, in what, in the form of Sheikhs, the fact is Manchester United are not allowed to spend so much. So remember, Mason Mount में they will be spending 60 million. ठीक है, दिसासी आएगा द बैकअप, पिकफर्ड आएगा, ही विल बी लॉट्स ऑफ मनी एज वेल. तो मुझे लगता है विद दैट अगेन पिकफर्ड और मे बी अ सुपर स्ट्राइकर में दे वुड गो फॉर पिकफर्ड इन माय ओपिनियन. That's just my thought. I don't think United is getting Kane or Mbappe or Osimhen. Hoyland is the realistic option. Exactly, हम realistic डाल रहे हैं यहाँ पर. Gonzalo Ramos could have been one, but I think Harry Kane again वो छोड़ेगा अगर Tottenham. I feel he's going to Real Madrid put in. Simple as that. अगर वो छोड़ेगा, that is. और माएंगे Real Madrid पर भी. Mbappe, as much as we would like to say yes, अभी मुझे लगता है Mbappe कहीं नहीं जा रहा. And that's breaking news, bro. अभी के लिए. If Hoyland doesn't work, याद रखिए, Luis Enrique just in time वो ला रहे. Hoyland doesn't work, Ten Hag will start Rashi up front, Martial and Garnacho. Yes, that might be a possibility for sure. So, bhai, this looks the likeliest option as of now, as things stand. Yes, of course, Sancho might play on the left-hand side. मुझे लगता है अगर Hoyland शुरू नहीं करेगा, Sancho might play on the left-hand side. Rashford will play centrally, not Martial, etc. or Garnacho. They will not be starters in our opinion, at least for the time being. They will be great super subs. But, so, bhai, this looks the Manchester United one. तो Manchester United कर लिया जल्दी से. Let's go to the next one. Why is no one going for Gonzalo Ramos? कहीं ना कहीं Gonzalo Ramos in even आप देखो ना बेनफिका के लिए भी प्रांशु. I think अगर आप सच में बोलो तो who has been the main guy for Benfica in terms of attack? I think it has been the number 10 Rafa Silva. That's my honest opinion. So I don't think he's the kind of guy who does a lot of things. Hoyland comparatively he's youngish, more youngish. तो वहां पर you have much more scope. Real Madrid next. ठीक है, चलो let's do Real Madrid. Everyone, let's go Real Madrid guys. Real Madrid कैसे खेलेगी नेक्स्ट सीजन में? Are they also going a 4-3-3? क्या लगता है? Pretty sure 4-3-3 everyone. Real Madrid fans in the house or La Liga fans or neutrals, everyone. 4-3-3 is what Real Madrid go. Let's get to 150 likes. 4-3-3 हम कर रहे हैं स्टार्टिंग. डेफिनेटली आई सी अ 4 और 4-2-3-1 भी हो सकता है कंसिडरिंग द काइंड ऑफ साइनिंग्स. ब्राहिम डियाज आ रहा है. आई डोंट नो, 4-2-3-1 माइट बी, लेकिन 4-3-3 से शुरू करेंगे. ठीक है, we'll do two formations maybe for Real Madrid. So let's start at 4-3-3 and then it could become a 4-2-3-1 as well in gameplay. ठीक है, so सब लोग यहाँ पर in goal obviously for Chelsea fans what he is, but for Real Madrid fans he's already that level. We all know the difference. But right back, left back पहले छोड़ देते एक मिनट. Center back Militao. ठीक है, और सेंटर बैक आई थिंक नेक्स्ट सीजन भी अगर रूडिगर शुरू नहीं करेगा ना वो हड़ताल कर देगा मेरे भाई. रूडिगर हैज टू स्टार्ट ब्रो. रूडिगर हैज टू स्टार्ट इन माय ओपिनियन. पीपल माइट डिसएग्री रियल मैड्रिड फैंस दैट अलाबा शुरू करेगा सेंटर बैक, बट आई थिंक यू नो व्हाट, कंसीडरिंग फ्रैंक गार्सिया आ रहा है एंड आई नो अल्फोंसो डेविस में इंटरेस्टेड है, आई थिंक अलाबा माइट एक्चुअली स्टार्ट एट लेफ्ट बैक. आई फील नेक्स्ट सीजन. और मेंडी, आई एम नॉट श्योर अबाउट हिम बट आई स्टिल फील दैट दिस माइट बी द थिंग. रूडिगर अगर नेक्स्ट सीजन शुरू नहीं करता भाई, लिटरली रॉबरी हुई है भाई चेल्सी से. Rudiger needs to start next season. Come on, Rudiger and Militao have to start in my opinion next season. Similar to basically how Kunde would expect to play the center back in the second season in Barca. I think Rudiger would expect to start in center back by next season, in my opinion. 4-2-3-1 भी जाएंगे. Zidane will do that as well. ये देख लेते हैं. What मानो? Garcia starts for you? I don't think so, bro. I don't think so. Alaba, Militao, Carvajal, Bellingham, Cruz, Camavinga. Yeah, I think. As much as Modric is doing in the Nations League, doing it week in week out, जैसे हमने बोला Thiago Silva के लिए at the center back position for Chelsea, Modric might not be a starter. I think Kroos Modric eventually will give that, and for me, things are clear. तो यहाँ पर you will have Camavinga, rather एक second ये वाला I think Bellingham, Camavinga might actually sit. You will have Camavinga on form. Jaro, I think Chouamani eventually will come in my personal opinion. Like, I think all form will go with this. I think this makes more sense. Valverde, everyone, does it make sense? Right back Fede Valverde? No, yaar, I don't think so. Fran is very good. He's very good.
but I just knowing Ancelotti, bhai, I do know Ancelotti, bro, enough. Been a Ancelotti fan, been an AC Milan fan, been a Chelsea fan. Telling you guys, Ancelotti will be hesitant to start Fran Garcia, in my opinion. Just knowing him, I think Alaba, he will talk Alaba into playing left back to begin with. Eventually, yes, हम second lineup करेंगे, उसमें maybe he'll come out. Cruz has to play. तो आप बोल रहे हो at least one guy, Cruz and Modric has to play. But would you drop a Camavinga or a Valverde? That's the thing. Fede as right wing, center forward, Rodrigo. Well, I don't think so, bro. I think Rodrigo is enough to start as in that position. As much as ideally would say that Brahim Diaz aa raha hai for a reason, but I think Rodrigo starts here, bro. Rodrigo starts here. As much as he's not ideally a right winger, we all know that. Vinicius Junior. By striker, does Joselu start? Who does go? Does Mbappe go to Real Madrid? Fran will be rotational to begin with, yes. Then he eventually will come in. Valverde right wing खेलना पड़ेगा. Not really, not really. My lineup could be Carvajal, Militao, okay, Rudiger, Alaba, Jude, Chouameni, Modric. Eventually Chouameni मेरे ख्याल से आने वाला है. भाई कामाविंगा बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, but I see a mistake in him every match. As much as बाकी समय he's better than Chouameni, absolutely. Rodrigo, Joselu and Vinny. Wow. Okay, Don Carlo will start one between Cruz and Modric. हाँ, ये भी अच्छा पॉइंट है. ये भी अच्छा पॉइंट है. He will probably have to start with them. So that means Valverde not starting. Wow. I think Rodrigo has to start, bro. Rodrigo has to start. I think he's done enough. कहीं ना कहीं Valverde का form गिरा था, तो I think you can say, wow, this might be a thing. I think Modric starts over. I think I've heard Carlo Ancelotti a lot. He rates Modric at like absolute goat level. He rates Modric. It's either Cruz or Chouameni for me a DM. Either play a natural ball winner or a senior player with positional intelligence. Valverde right back नहीं यार. Right back तो नहीं खेलेगा. In order to fit one of the old guards, Kama has to go to right back. नहीं, Kama right back तो बहुत ज़्यादा हो गया ना. Rodrigo center forward, Valverde right wing. Kama नहीं. I think there will be a striker. Real Madrid is what we are talking about. There will be a new striker coming in. As much as Joselu आप बोले, भाई मुझे लगता है ना, people might be shocked to see this, but I think the fact that they might get rid of Ferland Mendy, और मुझे लगता है they might have to, go into the transfer market. By striker, I know उन्होंने बोला है they're not buying anyone else, etc. We are talking about Real Madrid. We all know, having seen enough of Real Madrid, bro, they are going for another striker. और yes, Mbappe does not look like he's coming for this season. वो सोचेगा to the end of the next season. अभी लग रहा है possibilities है for him to stay or come next year, not this year. So abhi, I think among the guys that they're linked with, Kolo Muani, they are linked with obviously an Ozyman. By I think, you know what, considering Rudy Garcia gaya hai, I know he wants to build around Ozyman, and I don't think Napoli sabko rakh sakti hai, and I know it'll be very expensive. It might be just this. पता नहीं, मुझे लगता है, and I'm just going with the gut as well as the news that is coming through, and I know it's very expensive, but I think Real Madrid, we all know that they will be able to afford. We all know that. Let's be real about it. Cancelo to Real Madrid. This on loan might be a possibility as well. In fact, people might be shocked, but I think हमने Cancelo को बारसा में नहीं डाला था. I feel that this might actually happen. He is linked as well. Remember that. Carvajal, लेकिन on loan. That's why it's not a signing. It's on loan. Carvajal हो सकता है. Again, he might be the captain. लेकिन Modric को डाला है मैंने, तो he'll become the captain. Carval, Militao, Alaba, Garcia, Jude, Chouameni, Camavinga, Vinicius, Rodrigo, Valverde. Okay. I think Animesh, आपसे मैं agree करता हूँ. If they get Kane, they won't go for Mbappe. Bhai, to be honest, you know what? This looks more likely. What do you think? Ozyman शायद नहीं आएगा. I think it makes sense. So Mbappe going next season to Real Madrid. I think I would like to change this. Harry Kane, I think I know Spurs जाने नहीं देगी etc. But Postecoglou है versus Rudy Garcia. I think it's easier to kind of think that Kane finally will leave. What do you think, people? अगर Kane जाता है, then Mbappe can also come next season because Kane then will be in his closer to his into the 30s, right? So वहां पर I think this is more likely compared to Ozyman, who would like to be a starting striker even next season. I know Ozyman और Kane दोनों ही बहुत expensive होंगे. दोनों we are talking a 100 million pound range. That is about, if I'm not wrong, 120 million euros range. तो बहुत ज्यादा है. तो रोड्रिगो सेंटर फॉरवर्ड नहीं, मुझे नहीं लगता. अनलाइकली. चलो, बट बेसिकली स्पीकिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यहां पर एक सेंटर फॉरवर्ड डेफिनेटली आ रहा है. भाई बोलने की बात है कि रियल मैड्रिड का ट्रांसफर बिजनेस हो गया, इतना जल्दी नहीं हुआ. आई एम टेलिंग यू गाइस ब्रो, राइट? ये बात आप क्लिप कर दीजिए. नहीं हुआ है. आई एम राइटिंग एंड गिविंग यू गाइस, नहीं हुआ है ट्रांसफर विंडो.
एक बंदा ऑन लोन लेंगे, दैट इज कैंसेलो आई फील, बिकॉज आई थिंक कैंसेलो इज नॉट स्टेइंग इन सिटी. हमने जो सिटी का फॉर्मेशन बताया है उसमें आई डोंट थिंक दैट ही फिट्स इन. But you have a Harry Kane or Osimhen or maybe even Colomani. One of them will go to Real Madrid. My personal opinion. I definitely believe that. Maybe Colomani भी हो सकते हैं. But that is Hoselu. Maybe to begin with, he's a striker. But I think they will get towards the end of the transfer window one big name, in my personal opinion. इसलिए हम गए. Jonathan David, नहीं, I don't think so. भाई एक सेकंड, मैंने ये डाउनलोड कर लिया क्या? हाँ, तो I've downloaded. Guys, this is what it seems like to me. Again, this could become a 4-2-3-1 if they change the personnel. हमने नाम बता दिया. If basically Brahim Diaz comes into the starting level, which I don't think will start as things stand. So it could become a 4-2-3-1. If okay, left back Garcia, Mbappe or Firmino as striker, right center midfielder Fede. Again, Valverde के लिए बहुत harsh था, but on form जा रहे. Simple as that. लेकिन भाई हमने कर लिया है भाई. What a stream, guys! Everyone, let's hit that like button. सब लोग have we crossed 150 likes? Have we crossed? Let's go to 175 likes, guys. I think we deserve it, and I love it as well. उल्टा कर दिया, but come on, let's get to those likes, everyone. We have covered Barcelona. हमने किया tactical analysis as well as the possible starting 11s, start of the season, mid season. We have done the same thing for Chelsea. We have done the same thing for Man City, Manchester United, and Real Madrid. By next, we will go to Arsenal. नो आर्सेनल फैंस इन द चैट, लेकिन ईपीएल फैंस और देखते हैं क्योंकि इट कनेक्ट्स चेल्सी एज वेल. आर्सेनल करते उज्जवल बोल रहे. चलो लेट्स गो टू आर्सेनल गाइस, एंड वील कम टू द अदर लीग्स एज वेल. वी आर डूइंग प्रीमियर लीग, ला लीगा मेनली. पीएसजी भी कर सकते हैं. इट्स अर्ली डेज आई नो, बट लूचो का देखते हैं व्हाट ही डज. बट अभी के लिए आर्सेनल. नाउ आर्सेनल क्या खेलेगी? Arsenal, in my personal opinion, will change the formation as much as मैं चाहता नहीं. Being if I was an Arsenal fan, which glad I'm not. Sorry Arsenal fans, but that's the truth in my opinion. लेकिन हम जाएंगे 4-1-4-1 everyone. भाई सेरिया और बुंडेसलीगा और लीगा हम अलग से करेंगे कॉल स्ट्रीम, ठीक है? वी आर ट्राइंग टू कवर. एक टिक मार्क डाल रहे हो टू एंटायर प्रीमियर लीग. टू when I say entire Premier League, we are talking about the top 6 clubs as well as all the expected top 6 clubs, or of course the top 2 in La Liga. Atletico Madrid का टाइम नहीं है मेरे ख्याल से. But anyway, let's look at Arsenal now. I think that they might go with this 4-1-3-1. Bhai Franchu, I love you, bro. You've done a Todd Bowley, bro. 4-1-4-1 looks more likely. 3-4-1 also is likely, yes. जो मैन सिटी ने किया था, it looks likely. वो इन गेम हो जाएगा उज्जवल. हम समझाएंगे कैसे होगा वो. बायर्न नहीं किया अभी तक, लेकिन टाइम परमिट्स विल डू इट. भाई शुरू करते सबसे पहले. तो आई थिंक एज मच एज ट्रोसार्ड ने किया है जॉब, लेट्स सी रियल. गैब्रियल जेसस स्टार्ट्स इन गोल. आई थिंक रैम्सडेल है. हम स्ट्राइकर से क्यों शुरू किए? चलो लेफ्ट बैक, आर्सेनल के लेफ्ट बैक it will be a Zinchenko, which he could walk into midfield as well as things go. Tierney will still be there as a backup. He's anyway injury prone. Right back पर आएंगे, we'll come to that. Center back Saliba of course starts. Gabriel starts with him. कौन सा गैब्रियल भाई? 3 गैब्रियल है क्या वहां पर आर्सेनल में? ये गैब्रियल पॉलिस्टा भी हुआ करता था आर्सेनल प्लेयर जो वेलेंसिया के लिए खेलता है अब. गैब्रियल, हाँ ये गैब्रियल है. सीडीएम गाइस, सीडीएम डेक्लन राइस. वाओ, कौन सोचा था डेक्लन राइस जाएगा आर्सेनल? भाई 100 million is going to Arsenal. As much as Man City fans would like to say, हमने मैन सिटी कर लिया और डेक्लन राइस की बात नहीं किया था for a reason. I think 4-2-3-1. I think Declan Rice will play this. And remember, again, Kai Havertz is going to Arsenal only if he's starting. नहीं तो भाई बेवकूफ इंसान है एक नंबर का. तो Havertz definitely is here. और आई थिंक यहाँ पर ओडेगार्ड डाल देते हैं एक्चुअली इस साइड, क्योंकि ओडेगार्ड और साका का जो है पार्टनरशिप. Havertz can play leftish side थोड़ा सा as a number 8 as well. और here you have a Saka starting. और यहाँ पर ट्रोसार्ड या मार्टिनेली ऑन. आई थिंक मार्टिनेली शुरू करेगा क्योंकि लास्ट में इसके बावजूद नहीं, लेकिन ट्रोसार्ड अगर गया स्टार्टर एक्सपेक्ट करेगा क्या? विल यू स्टार्ट ट्रोसार्ड और मार्टिनेली? आई थिंक मार्टिनेली स्टार्ट्स फॉर मी. राइट बैक, लेट मी सी, लेट्स सी. भाई सब लोग लेट्स हिट दैट लाइक बटन. कम ऑन गाइस, माय फैम. मार्टिनेली स्टार्ट करेगा. इवन आई बिलीव सो. ही इज डन इनफ इन द लास्ट पार्ट ऑफ द सीजन एज वेल. पार्टे आउट राइस एंड यस. Partey, I think, will be in the squad though. कहीं ना कहीं he will be unhappy in the next window. He might leave, not the summer window, in my personal opinion. Hoselu goals predict. Bhai, I feel that he may not be a starter as of now. He's a starter, but definitely I think towards the end of the window आप देखेंगे someone else comes in my personal opinion. सब लोग आप लोग बोलिए.
or right back Ben White. Ben White has done enough to start. By to be honest, Arsenal, I don't know, man. I think considering we are talking Kyle Walker going to Bayern, I know he does not like to play a right back, but I feel मतलब I don't know. He's been linked as well for a reason. Guys, Benjamin Pavard, हमने बात नहीं की इसकी. What do you think? I know it's harsh on Ben White, but Ben White, just like a Kunde, is not like a right back really. I don't think it continues. कहीं ना कहीं it's unfair, and if they go and this could turn, and remember Pavard does not want to play right back. लेकिन मैं समझाऊंगा आप लोग को क्यों. This is quite possible. Again, it is hypothetical right now based on the थोड़ा बहुत links, but this is quite likely. Premier League के लिए you would say Pavard is not a right back and he does not want to play right back. And I totally understand White has a better season, but he does not want to play right back. But अगर वो आएगा Arsenal, तो he might actually start, in my opinion. तो यहाँ पर they might change the formation in game. ठीक है, सो दे माइट बिकम अ 3-2-3-2 जस्ट लाइक अ मैन सिटी जो हमने किया था. तो ये हो बन जाएगा. पवार्ड को ये कन्विंसिंग पॉइंट मिलेगा दैट भाई तू सेंटर बैक ही है, तू राइट सेंटर बैक है इन अ बैक थ्री, एंड दिस इज हाउ जिनचेंको राइस विल बिकम द सेंटर. देन यू हैव यहां पर हैवर्ट्स विल शिफ्ट टू द लेफ्टिश साइड, ऑल्दो इज नॉट अ विंगर, वी ऑल नो दैट. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट फॉर्मेशन जो हमने किए थे. एंड देन हैवर्ट्स एक्चुअली इन दिस फॉर्मेशन ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पर ट्रोसार्ड बोलेगा भाई मैं शुरू करना चाहता हूँ. हैवर्ट्स विल गेट सच्चाई समवेयर ऑन द लाइन. ठीक है, दिस एक्चुअली माइट बी अ थिंग. Martinelli is also a forward, remember that. This is quite possible, guys. Think about it tactically. I think this should be good enough. Martinelli, Jesus or Trossard or Saka, bro, with Odegaard. That's a really attacking lineup with Zinchenko, Rice kind of behind them. In gameplay, this is what it will happen. ठीक है, आप बोल रहे हो White had a better season than that. ये डाउनलोड करके रख रहा हूँ. And यहाँ पर between Pavard and क्या बोलते हैं, Pavard and White, there will be a battle. Simple as that. ठीक है, this could be a possibility. Guys, just think about it. This Arsenal is actually looking dangerous. It is. Just see practically. This is quite possible, guys. Again, Trossard के जगह Havertz आप डाल सकते हो, लेकिन वाइडिश मैं बोलता हूँ Trossard is better. तो हमने दो ऑप्शन दिखाया आप लोगों को आर्सेनल का, एंड प्रीमियर लीग विनिंग टीम. वाओ, आई डोंट थिंक सो. आई थिंक टॉप 4 side definitely. Arsenal top the table on match day 1. Come on, best 11 Arsenal. Yeah, probably remove Pavard for White. Exactly, हमने किया है. Havertz not starting, he is downgrading. He is. That's what I'm saying. अनमोल, मैं बहुत surprised हूँ. मेसन माउंट तो शुरू करेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड में. हैवर्ट्स विल बी लाइक अ रोटेशनल स्टार्टर, एंड दैट्स व्हाट मैं सरप्राइज्ड हूँ, क्योंकि वहां पर ट्रोसार्ड, ओडेगार्ड, एमिल स्मिथ रो, मार्टिनेली, साका, जेसूस, भाई एनकेटिया, इतने सारे फॉरवर्ड बेस्ड प्लेयर्स है ब्रो. आई डोंट नो हाउ विल स्टार्ट. आई हैव नो आइडिया. ही इज नॉट अ मिडफील्डर ब्रो. वो बायर लेवरकुसेन की खेला है, नंबर 6 भी खेला है एट टाइम्स, बट mainly he's played more like a number 8, number 10, and Chelsea में number 9 for whatever reason. But anyway, have I downloaded this? एक second, I'm not downloaded this क्या for whatever reason. Anyway, let me download this and keep. I'll publish it later. Guys, सब लोग like बटन दबा दीजिए. But क्योंकि पवार्ड अभी श्योर नहीं है, तो I'm just putting White. लेकिन I'm telling you, जैसे हमने डाला है Cancelo to a Real Madrid on loan, I think आप देखेंगे पवार्ड going to Arsenal, in my personal opinion. Still Arsenal depth not good. Yeah, depth is not good enough for a Champions League, but I think it's certainly better than what they were last season, bro. So they are going progressing for sure. He should rather go back to Leverkusen under Alonso. That's Hazard. Havertz we're talking about, right? Hazard नहीं. Wow, he is good, लेकिन one off game है, इसलिए हम week in week out के लिए Pavard / White बोले. Just like we have put Havertz / Trossard, हमने बोला है Pavard / White in terms of Arsenal. But देखते हैं Messi is good क्या बोल रहे हैं. Rice, Kai, Saka, Odegaard and Martinelli, and if they get a good striker like Vlahovic or someone, नहीं मिलेगा. Why would they go? They have an Nketiah, Jesus, a Martinelli, a Trossard, 2 false 9, जैसे Chelsea का बोला था वैसे ही, 2 false 9 and 2 main strikers, bro. That's enough. Nketiah is a proper striker. People forget he's done well when asked upon to come. Yes, Champions League level nahi hai, but you have a backup. Remember, Havertz can also play that false 9. Remember that. Not ideal, but आपके पास Trossard, Havertz, Martinelli है who can play that role if you don't have a Gabriel Jesus or a Nketiah. You have 5 people who can actually play a striker role. Just saying. Bayern भी कर लो भाई, टाइम है क्या भाई. एवरीवन वी हैव डन. तो स्पर्स नहीं चाहिए आप लोगों को. Pretty sure that भाई स्पर्स फैन थे भाई. Yes, that's breaking news. Spurs fan थे in the chat. लेकिन I think Bayern
फैन ज्यादा है, तो बायन करना चाह रहे हैं आप लोग, सब लोग, एवरीवन? वी हैव टाइम फॉर इट, क्विकली। भाई बायन का कर लेते हैं जल्दी से। टूकल क्या खेलेंगे? द वे दैट इज गोइंग फॉर ऑल दीज डिफेंडर्स, is does that mean that Tuchel will play three the back? Bayern fans, do let me know, what will Tuchel play next season? Is he going for a three the back formation? I think I have a feeling, considering itne sare jo links ho rahe hain na with the defenders, he might just go with this. भाई क्या बात है, 150 लाइक्स नहीं हुए मेरे भाई अभिषेक, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग ब्रो। पीएसजी करना है अनमोल, पीएसजी भी कर सकते थे, बट मैं मुझे पीएसजी करने का मन था आज, लेकिन कोई नहीं, हम पीएसजी नेक्स्ट स्ट्रीम में कर लेंगे। बायन क्योंकि काफी लोग बोल रहे, स्पर्स और न्यूकासल नहीं कर रहे अब, ठीक है? तो बायन फॉर्मेशन बोलिए सब लोग, व्हाट इज द फॉर्मेशन? 4-2-3-1? आई थिंक दे माइट चेंज द फॉर्मेशन, आई फील, आई हैव अ वियर्ड फीलिंग दैट दे माइट चेंज, लेकिन चलो 4-2-3-1 शुरू करते हैं। 4-2-3-1 वाइड, लेकिन राइट, नॉट नैरो। They have signed many players, that's why. Chalo, anyway, let's go. Let's start with the formation, everyone. 3-4-3. बायन का कर लेते हैं, लिवरपूल हम मिस आउट कर लिया एक्चुअली, यस दैट्स ट्रू, बट एनीवे क्विकली कर लेते हैं गाइस, लेट्स डू अ बायन इन गोल। नॉयर इज कमिंग बैक ऑब्वियसली बिकॉज़ समर इज गोइंग, लुक्स लाइक इट टू इंटर मिलान, दैट्स व्हाई हमने किया ओनाना कमिंग टू चेल्सी एंड देन पिकफोर्ड गोइंग टू यूनाइटेड। बट एनीवे राइट बैक फॉर बायन विल लीव इट ब्लैंक अभी के लिए, बिकॉज माजरावी है, बट आई नो वॉकर हमने बोला है कि छोड़ रहा है, तो आई थिंक ही लीव ओनली इफ ही स्टार्ट्स इन माय ओपिनियन। एज मच एज माजरावी थोड़ा नाखुश होंगे इससे, स्टैनिसिच भी। लेफ्ट बैक डेविस खेलना नहीं चाहते, बट भाई आपको खेलना पड़ेगा इन ट्रांजिशन, वील डू दैट एज वेल, दे विल बिकम अ थ्री द बैक, एंड दैट इज वेयर डेविस को सेल कर सकते हैं, बिकॉज वॉकर कैन प्ले अ राइट सेंटर बैक इन अ बैक थ्री। आई थिंक दैट्स ब्रिलियंट, यस। तो भाई यहाँ पर सेंटर बैक ऑब्वियसली द न्यू सेंटर बैक्स, क्या बोलते हैं, डाल दे किम मिन जाए, किम मिन जाए। बायन का लेफ्ट सेंटर बैक कौन होगा एवरीवन? सेंटर बैक बायन का कौन होगा? लिंक्स काफी थे ना, एक सेकंड। दे हैव किम मिन जाए, उपमेकानो डजंट स्टार्ट इन माय ओपिनियन, लूकास हर्नांडेज इज गोइंग टू पीएसजी, बट आई थिंक कल ही क्लियर किया है कि लूकास हर्नांडेज इज नॉट गोइंग टू पीएसजी, सो लेकिन सो डिलिक्ट ओनली स्टार्ट्स, because there is still a chance that Lucas Hernandez might go to PSG, as it is he's coming back from injury. So delay starts. They might change left center back, right center back position थोड़ा सा. I think यहाँ पर no brainer. This guy is not leaving. Kimmich, Goretzka, as much as Bayern fans चाहेंगे नहीं, reality है that I don't think Leimer starts. Goretzka itself starts. Would you start Leimer over Goretzka, everyone? I wouldn't. I wouldn't. I know Leipzig छोड़ रहा है for a reason, or Gravenberg, no, not really. Cam, obviously, we are putting Musiala. I don't think there's a change there. As much as Newcastle के लिए open था, भाई बंदा शुरू करेगा. I think it'll be sorted out, and I think Sadio Mane will start at left wing, right wing. I think Gnabry slash Sane, I think दोनों will sort it out and they will finally start. लड़ाई के बाद उन्होंने शुरू नहीं किया भाई. I think it's high time that they start together. And Muller does not start. Striker is the main question. Who is coming to striker position? I know they don't spend big. याद रखिए हमने डाला है either of Osimhen या Kane going to Real Madrid, and I feel this guy will leave Frankfurt कहीं ना कहीं, and I feel they will have to go with this, as much as वो बोल रहे हैं that they are okay with a Matthias Chel slash Chopu Moting. मुझे लगता है Kolo Muani will go to Bayern eventually. क्या लगता है? गोरेट्स्का शुड स्टार्ट? यस। माने डजंट स्टार्ट? नहीं, आई थिंक द फैक्ट दैट ही स्टे इन बायर्न, आई थिंक ही विल वांट टू स्टार्ट। माने टू न्यूकासल बहुत लिंक्स हुए, बट आई डोंट थिंक दैट्स हैपनिंग। आई थिंक फरहान टोरेस टू न्यूकासल लुक्स लाइकली, एंड हर्षित मेरे ख्याल से, बिकॉज बारसा नीड द मनी, दैट्स आल्सो। लाइमर इज बेटर, हाँ वो डाल सकते हैं, लाइमर को डाल सकते हैं, दैट इज वन और द अदर। कोलोमुआनी, व्लाहोविच हमने डाला है चेल्सी में ब्रो। चोपू मोटिंग एंड कोलोमुआनी बेसिकली लड़ेंगे फॉर दैट स्टार्टिंग स्पॉट, सिंपल एज दैट, ठीक है? तो यहाँ पर भाई सब लोग डू नॉट फॉरगेट दैट लाइक बटन, मैं देख रहा हूँ लाइक्स काफी कम हुए। तो यहाँ पर एक सेकंड, गोरेट्स का ये मैं डाउनलोड करके रख रहा हूँ। बैकअप क्या होगा? मैं अभी फॉर्मेशन चेंज करूंगा गाइज, वेरी टैक्टिकली वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन why basically Bayern are going for Walker and why Davis will be convinced to play this formation despite not wanting to play left back, जो openly बोला है बंदे ने। तो I think this might change into this, ठीक है? आप देख सकते हो व्हाट वी हैव जस्ट डन। साने, तो एक सेकंड, किमिक को डाल देते हैं यहां पर, ठीक है? किमिक बन जाएंगे आपके राइट मिडफील्डर, आपके कैम हो जाएंगे मुसियाला, वो तो थे ही खैर,
देन यू हैव अल्फोंसो डेविस, नहीं यहाँ पर यू हैव अ डेविस, ठीक है। यहाँ पर यू विल नॉट, जो यहाँ पर है ना इन मिडफील्ड यू विल हैव अ लाइमर कमिंग, साने विल नॉट स्टार्ट, ठीक है। लुक एट दिस गाइस, just look at this. And Delict in the middle of the back three is beautiful. By everyone, this is what Bayern is going to become eventually, in my personal opinion. Knowing Tuchel and looking at the players who are being linked, because Walker is wonderful there as well as Kimmich is wonderful where we are kept now. By this looks quite likely मेरे ख्याल से। क्या लगता है आप लोगों को? राफा गुरेरो, हाँ राफा गुरेरो हमने डाला नहीं स्टार्टिंग लेवल में। यू नो व्हाट अनमोल, अच्छा याद दिला आपने। आई थिंक फॉर द बैक में मे बी राफा गुरेरो स्टार्ट्स, लेकिन कम ऑन अल्फोंसो डेविस के ऊपर नहीं स्टार्ट करेगा यार, मेरे ख्याल से दैट्स क्लियर। देखो राफा गुरेरो वहां जा रहे हैं बिकॉज he got a better option in Bayern compared to Turkey, who was getting the other options. So that's why he's going, I think, on a free, if I'm not wrong. PSG भी कर लो, चलो क्विकली कर लेंगे। मैड्रिड का कर लिया भाई, आपने मिस कर लिया है मेरे भाई राज, थोड़ा आधे घंटा पहले आप रिवाइंड करिए, आप देख सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं। हमने किया है बारसा, हमने किया है मैड्रिड, हमने किया चेल्सी, हमने किया आर्सेनल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैन सिटी, खाली लिवरपूल मिस कर दिया है, लेकिन वी हैव डन बायर्न नाउ एंड वी विल प्रोबब्ली डू अ, एक्चुअली लिवरपूल कर देते हैं, पीएसजी नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, क्या बोलते हैं? लिवरपूल कर लेंगे क्योंकि हम प्रीमियर लीग का टिकमा करना चाह रहे हैं, ठीक है। नहीं तो लिवरपूल विल डू इन द नेक्स्ट स्ट्रीम, वो भी कर। सिटी वी हैव डन ऑलरेडी डन। स्पर्स, हाँ आई विश, मैं सोचा था भाई, लेकिन ये है बायर्न का, ये डाउनलोड कर लिया मैंने, आई डोंट थिंक आई हैव डाउनलोडेड, हैव आई हैव डाउनलोडेड, यस ठीक है, डाउनलोड कर लिया। कौन सा करना है? लिवरपूल, सब लोग कौन सा? मैड्रिड कर लिया भाई, जहाज कर लिया, ऑलरेडी कर लिया, दो बार थोड़ी करेंगे मेरे भाई। थैंक्स फॉर कमिंग, डू नॉट फॉरगेट दैट लाइक बटन। स्पर्स इजंट अ टॉप 6 क्लब, देखिए यू कैन आर्ग्यू दैट, आई थिंक न्यूकासल स्पर्स है, मैं टॉप 5 किया हूं, एक्चुअली टॉप 4 किया हूं, ओके लेट्स पुट इट दिस वे, आई हैव डन टॉप 4 ऑफ प्रीमियर लीग, दैट इज बेसिकली व्हाट, चेल्सी हंसेंगे लोग, आई नो नेक्स्ट सीजन के टॉप 4 होने वाले। मैं, मेरा प्रेडिक्शन भी साथ साथ में आ गया, देखो न्यूकासल इज नॉट इन माय टॉप 4 नेक्स्ट सीजन बिकॉज़ दे आर चैंपियंस लीग, लेट्स सी हाउ दे डू। आई थिंक लिवरपूल न्यूकासल में डाल रहा हूँ टॉप 6 में। पीपल आई एम नॉट हेटिंग, आई एम जस्ट गिविंग एन अर्ली प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन द ट्रांसफर न्यूज अभी का। आई एम सेइंग मैन सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, यहाँ पर चेल्सी एंड आर्सेनल, ये मेरे टॉप 4 है क्या? अरे भाई साहब, न्यू लिवरपूल को हटा दिया मैंने ऑल ऑफ सडन। तो मैंने 4 टीम्स किया ईपीएल का, टॉप 2 किया है, बार्सिलोना रियल मैड्रिड दोनों का किया है, एज वेल एज आई हैव डन बायर्न म्यूनिख, बट वी कुड हैव डन पीएसजी। भाई पीएसजी कर लेते क्विकली अली लाल पीएसजी क्या खेलेगी यार? पीएसजी इंटरेस्टिंग रहेगा। व्हाट इज पीएसजी गोइंग टू स्टार्ट विद? मतलब विल दे चेंज द फॉर्मेशन? लुइस एनरिके लाइक्स टू प्ले 4-3-3, वी ऑल नो दैट। तो पीएसजी क्या करेंगे? लेट्स डू पीएसजी बिकॉज दे आर आल्सो वेरी एक्टिव इन द ट्रांसफर विंडो, और अभी लूचो का हॉट हॉट न्यूज है। भाई पीएसजी कर लेते हैं, एक सेकंड में, क्या बायर्न का क्यों कर लिया, एक सेकंड, पीएसजी 4-3-3, ठीक है। तो पीएसजी इन गोल, डोनोरुमा डिस्पाइट हिज मिस्टेक्स विल स्टार्ट। पीएसजी का एवरीवन लेट मी नो, पीएसजी का लाइनअप, बैक लाइन बताइए, व्हाट डू यू थिंक? लेफ्ट बैक कौन होगा? और ऑब्वियसली मेंडेस, नूनो मेंडेस, तो नूनो मेंडेस को डाल देते। मेंडेस क्यों डाल दिया? मेंडेस है मेरे भाई नूनो मेंडेस, ठीक है। राइट बैक हकीमी, ठीक है, दैट्स ऑब्वियस। तो हकीमी प्लेज द डैनी एल्वेज रोल ऑफ अ लुचो, और मेंडेस प्लेज द जॉर्डी अल्बा रोल ऑफ लुचो। और सेंटर बैक्स, एक सेकंड, ये तो सबसे पहले डाल देते हैं उगाटे, इज बी द सिंगल पिवट, ठीक है। और सेंटर बैक्स कौन होगा? और एक मिडफील्डर वेराटी को डाल देते हैं, ऑब्वियस वाले डाल रहा हूं मैं सबसे पहले, ठीक है। वेराटी को डाल देते हैं, व्हेन फिट ही ऑब्वियसली स्टार्ट्स, ही विल रिमेन देयर, ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर एज मच एज यू वुड लाइक हिम। बाकी क्या बोल रहे हैं इन द चैट? मिलान स्क्रीनियर, यस मिलान स्क्रीनियर डेफिनेटली स्टार्ट्स, आई नो फ्री में जा रहा है बट आई थिंक ही इज गुड इनफ टू स्टार्ट। मिलान स्क्रीनियर स्टार्ट्स, मार्किनियोस एंड मिलान स्क्रीनियर एज व्हाट आई एम अज्यूमिंग। किम्पेम्बे नॉट स्टार्टिंग, और वुड इट बी समवन एल्स? एक सेकंड, बैकलाइन, बैकलाइन क्या है? Kimpembe, Skriniar. I think Kimpembe does not start, bro. As much as he's a leader in PSG, I know. I think Skriniar starts for me. He's better overall. Skriniar and Kimpembe. I think Marquinhos has to be there, bro. Marquinhos has to start. Yeah. आप बोल सकते हो Kimpembe is probably coming up, but I think in the back three,
प्रॉब्ली वो फॉर्मेशन अगर करे तो भाई ही कुड कम इन एब्सोल्युटली, लेकिन मुझे नहीं लगता लुइस एनरिके विल प्ले किम्पेम्बे। आई थिंक इज कंफर्टेबल। आई नो कहीं ना कहीं वांट उमटीटी रोल किम्पेम्बे खेल सकते हैं, बट आई स्टिल बिलीव मार्किनियो स्टार्ट्स ब्रो। आई जनरली बिलीव मार्किनियो स्टार्ट्स। सब लोग अदर नेक्स्ट कौन होगा? नेक्स्ट आपके मिडफील्ड में कौन होगा? मतलब विल इट बी विटीनिया, विल इट बी फैबियन रूइज, हु स्टार्ट्स एक्चुअली? याद रखिए जेर एम्बरी माइट गो टू मैन सिटी, दैट माइट बी पॉसिबिलिटी। ही माइट बी प्रमोटेड एज वेल अगर वो रहता है इन द पीएसजी सिस्टम। Danilo Pereira could also play as a midfielder, remember, or as the defender. But does he start in a Luis Enrique system? No. I think Luis Enrique likes to play that role as almost like a, कैसे बोलूं मैं, मतलब Verratti will be the Xavi of Luis Enrique, Ugarte will be the Busquets. I know very different players. और आपके Iniesta type player एक चाहिए, एक creative player. I think he would want there in midfield. I just feel that. तो maybe he will go with Carlos Soler. I know तो creative नहीं है, but I think he's more like a number 8 more. So I think Javi Simmons, yeah, he's been linked again. I think Javi Simmons might be a possibility. So Vitinha, you know what? Fabian Ruiz, Guardiola to नहीं, Guardiola to City हमने कर लिया already. We have completed City already. Javi Simmons, you know what? Javi Simmons actually might be a possibility, bro. मतलब I know it's too young to start, लेकिन Barca connection plus I think Javi Simmons, I think is, I don't know. People might disagree. लेकिन दैट माइट बी अ पॉसिबिलिटी। या आप बोल रहे हो नहीं, कम ऑन गाइस, हाउ कैन वी स्टार्ट विद जावी सिमंस? नहीं है, आई नहीं रहा। दैट टेल्स मी डोंट पुट हिम। तो आई थिंक द बेटर ऑप्शन देन वुड बी, आई थिंक थोड़ा बहुत क्रिएटिव। आई थिंक फैबियन रूइज माइट बी लिटिल टू डिफेंसिव फॉर दैट रोल। विटीनिया आल्सो माइट बी टू लिटिल बिट टू डिफेंसिव। और कौन है भाई, मैं देख रहा हूँ और कौन ऑप्शन है? विटीनिया और रेनाटो सैंचेज। आई डोंट नो। आई थिंक नो व्हाट, कार्लोस सोलेर ही होगा यार। याद रखिए कार्लोस सोलेर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वाज ही नॉट देयर इन द स्पेनिश क्या बोल रहा हूँ, स्पैन बोल रहा हूँ, स्पेनिश बोल रहा हूँ, स्पेनिश स्पेनिश स्क्वाड। कार्लोस सोलेर आई थिंक वो भी होता है यार थोड़ा सा। आई थिंक कार्लोस सोलेर माइट बी द गाय। पीपल माइट डिसएग्री बट आई फील कार्लोस सोलेर लुक्स मोर लाइकली। व्हाट डू यू ऑल थिंक भाई? देखिए स्पेनिश कनेक्शन, of course, Spanish national team coach. He had Carlos Soler in his squad, if I remember right. Everyone, that was a very debatable topic. अपने हमने कवर ही किया था वर्ल्ड कप, याद रखे। देखिए रेनाटो सैंचेज व्हेन फिट और कुड बी वन, लेकिन आई थिंक ही वुड रिक्वायर वर्क रेट से ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा अ पासर और क्रिएटर, व्हिच इज लिटिल बिट मोर, नॉट रियली, लेकिन सोलर इज मोर। आई थिंक ही लाइक्स दैट वन प्लेयर इन द मिडिल थ्री, जहां तक मुझे मालूम है। विटीनिया इज गुड, बट अगेन आई थिंक कार्लोस सोलर हैज अ लिटिल बिट मोर अटैकिंग प्रोवेस। लोसेल्सो, बाय द वे, बारसा में हमने बात नहीं की। आई थिंक लोसेल्सो कुड बी गोइंग टू बारसा, बट इट कुड बी एन ऑप्शन। लेकिन अभी के लिए बारसा लुक्स लाइकली, अगर बाय चांस गुंडोगन नहीं जाता है वहां पर, दैट माइट बी पॉसिबिलिटी। भाई ये createformation.com मेरे भाई हर्ष, बिग अप भाई। एवरीवन लेट्स हिट दैट लाइक बटन गाइस, आई डू दिस ऑलवेज, इट्स नॉट अ न्यू थिंग। लेट्स गो विद द प्लेयर्स इन द स्ट्राइकर पोजीशन। तो भाई द मेन स्ट्राइकर, पहले अभी के लिए एम्बापे डाल देते हैं। आई थिंक विल रिमेन देयर एटलीस्ट फॉर नाउ, as much as we don't like it. Asensio, I think starts. I don't think Lee starts. Why? Main striker कौन है PSG का? Everyone. Who is the main striker of PSG? Remember, we have put Kolo Muani in Bayern Munich. So who is going to become the main striker in PSG? नेमार को भूल गए हम। I just realized. नेमार is he leaving? Is he going to Saudi? नहीं, I don't think so. अब लुइस एनरिके आ गए, नेमार भाई has played under him. It's a no-brainer, and that's one of the reasons to get him. Guys, this is what you're talking. Neymar might become the withdrawn forward. That looks more likely. कहीं ना कहीं Neymar Mbappe will switch in between games और Asensio खेलेंगे rightish. This looks quite good. Do you not agree? Colomani, we have already put in Bayern Munich, guys. I think with Luis Enrique coming in, Neymar might be convinced to stay, in my personal opinion. Osimhen or Kane, one of them will go to Real Madrid, is what I'm saying. देवेश क्या हाल है भाई? मैनचेस्टर यूनाइटेड मिस कर दिया मेरे भाई देवेश, हमने कर लिया है मैनचेस्टर यूनाइटेड का 11, बट बिग अप टू यू एवरीवन। डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। 175 likes is all we're asking for. Renato Sanchez could be an option, but I believe the way Luis Enrique plays, remember Luis Enrique to PSG is almost done, if I'm not wrong. So going with that, we are going with this formation. I think he likes to play this kinds. PSG mid is very weak as compared to other elite. Yeah, but you can say that, इसलिए शायद you can get in a Renato Sanchez if fit. वो हार्डली फिट रहता है। तुराम विल बी देयर इन द स्क्वाड, बदवान बोल वो रहेंगे। आई थिंक तुराम विल कम, बट ही विल नॉट बी अ स्टार्टर एब्सोल्युटली।
लेकिन भाई दिस इज इट फॉर नाउ, वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट भाई टॉप 4 जो मेरा प्रेडिक्शन है फॉर नेक्स्ट सीजन. आई नो लिवरपूल कहीं ना कहीं हार्श ओपिनियन, लेकिन लिवरपूल करने का टाइम नहीं था. हमने करना है लिवरपूल पर न्यूकासल, इंटर मिलान, एसी मिलान. एसी मिलान मैंने नहीं किया है भाई. ऑफ कोर्स मे बी डॉटमंड, इवन एटलेटिको मैड्रिड, दीज क्लब्स हमने नहीं किया स्टार्टिंग 11, बट वी हैव कवर्ड अ लॉट भाई. अथर्व, आई वुड लव टू डू अ लिवरपूल, लेकिन वी आर कीपिंग द स्ट्रीम्स टू 1.5 hours ब्रो. लंबा स्ट्रीम है काफी. Much love for everyone being here. Again, it's always a fan channel for all to see. This stream proves it even more so. Bhai, lekin, where are my Chelsea fans? Where are my Barca fans? Where are my Real Madrid fans? Come on, let's go. Come on, let's put in some emojis in the chat, my members. Guys, if you want to check out our membership, do check it out as well. There's a lot of perks वहाँ पर. There are different levels. आप काफी अफोर्डेबल लेवल्स भी देख सकते हो, एज वेल एज ऑलमाइटी स्पोर्ट्स, जहां पर एक बवाल क्विज हुआ था कल, which is going to continue even there as well as here. Who am I is going to be back. So everyone, come on, let's hit that like button. Target 175 likes and let's get closer to 10k as soon as possible. Members, let's get some emojis, guys. Go on. Clifford, yeah, nice to see you. Bye. Again, people, we covered a lot of it. Chelsea, Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Man City, Arsenal, Bayern Munich, PSG. हमने 8 क्लब्स का किया है इस स्ट्रीम में. ब्रिलियंट स्टफ. Yes, absolutely, bhai. Always, always, absolutely. Chalo, bhai. Much love to everyone. Let's see what it is. We'll talk about a lot of other combinations. अभी के लिए इतना ही. Much love. Let's hit that like button or see you. By the way, 2 दिन बाद में again we are there on Wednesday on the match for India versus Pakistan. So people are interested, DM me. अभी के लिए इतना ही. See you on Almighty Sports and Almighty Blues very soon. Love you all.